sir. Manisha, am I audible? Yes, sir. Okay. Let me let me introduce. First of all, I welcome you all to the ATAL FDP hosted at the RK University, Rajkot, Gujarat. We are having a banner of the cybersecurity and digital forensics, and today is the 5th day of the ATAL FDP for the online session. Today we are pleased to have Dr. Akashdeep Bhardwaj from the UPES Dehradun. So I welcome you, sir, in the ATAL FDP Rajkot, hosted at the RK University Rajkot. Let me introduce Akashdeep, sir. I request participant to mute, and I request co-host Manisha, please mute the participants who are the just a minute. Excuse me for this interruptions. Yeah. Okay. Okay. So I again request all the participants, please mute while you are joining the meeting. You can ask any technical questions in the chat box, and we will ask you to unmute. If you are having any questions, you can raise the hand also. So let me introduce Dr. Akashdeep Bhardwaj, sir. He is from the UPES Dehradun, one of the best university in India. He is the postdoctorate PhD, and he is experienced in the cybersecurity and digital forensics professional. He is having a good publications in the reputed journal and conferences under the banner of the cybersecurity and digital forensics. You can find him in the Google Scholars also. He is having a good authored book also. He is author of the number of books. Today, we are pleased to have you, sir. And today we are having the opportunity to hear from the Dr. Akashdeep, sir, for the search vulnerable devices on internet. And sir will show the live demonstration over here. And he will show the operating system and applications hacking tricks also. So how to secure from the live attack, how to secure yourself, how to find the weaknesses or loopholes from the devices on the internet, that we are getting opportunity today from the Dr. Akashdeep Bhardwaj, sir. So sir, again, I welcome you in the ATAL FDP hosted at the RK University Rajkot. Over to you, sir. I'm going to stop my PPT. Thank you. Sir. Thank you so much. All right. Thank you, Snehal, sir. Good evening, everyone. My name is Dr. Akashdeep Bhardwaj, as sir said. So let's quickly jump on to our session. I hope everyone is able to see my screen. Yes, sir. We can see your screen and you are audible. Yes, sir. Yes, sir. Okay. All right. Great. So I'll basically start from basics, and then we'll go over to advanced. Okay. Any time you have any question or anything, please feel free to stop me. Okay. Raise your hand if you like, or any way you want to stop me. So I did not know this was going on. The FDP was going on for the last 5 days. So I thought it was my session only. So I created a small PPT, or rather a session of PPTs. Introduction to cybersecurity, the goals, the problems, the threats that we face, and then we look at searching live vulnerable devices. Okay, there are every device that is on the internet. If it is connecting to the network or internet, internet is somebody else's network. Okay, किसी और का system है वो, किसी और का network है वो, where no rules are there. Okay, you got good people, you got malicious people, you got attackers, you got different types of people. Okay, so और ऐसे devices जो हम बहुत खुशी connect करते थे. I buy a new phone, okay, Android phone या कोई Mac phone, कोई ऐसा कोई phone खरीदता हूँ मैं, उसमें अपना SIM डालता हूँ, and I say okay 4G enabled, or now we'll have soon 5G, and I don't patch it. Okay, patching is a security patch that is deployed or that is installed on machines, systems. All right.
पैच जैसा होता है ना, आप कहीं जा रहे हो, आपको कांटा लग जाता है छोटा सा राइट स्किन में, सो योर स्किन स्टार्ट्स टू ब्लीड राइट, थोड़ा सा ब्लड निकल आएगा, सो यू पुट अ पैच ऑन इट right. So similarly, security patching is something similar to this, where if you are going on over the internet and your system is not really secure, then it becomes vulnerable, it becomes open to attacks. Okay, and I'll show you दुनिया में live कितने devices हैं, systems हैं, even government के devices available हैं, not just Indian government, globally. Okay, and number 4 we look at some cybersecurity steps. Okay, there are a few steps that are followed by attackers. So उनको क्या किया है, तो framework बनाया है. Framework is nothing but a model. Okay, so that model has been created by different people. जाने माने लोग हैं. Okay, NIST है, majorly US NSA, National Security Agency, and they are sort of they've given out this thing to the world. Okay, initially it was being used by US Army. Now it is being used by everyone who wants to secure themselves. So that steps basically tells you how an attacker will come onto your network, वो क्या करेगा, कैसा करेगा, और डेटा लेके कैसे भाग जाएगा. Okay, so it's a very elaborate way of presenting the whole cybersecurity framework. Okay, any questions so far? I hope I'm not going very fast or very slow. या हिंदी इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ, right? Any doubts, any questions? It's totally fine, sir. Okay, all right, sure, sir. Okay, so I'll just introduce you to cybersecurity. I know you guys Go are ahead. sure. So you guys are experienced now, right? But सबको एक platform पे लाने के लिए we'll just have a bit of introduction and then we'll go into the live part. And I want you guys also to do it with me. Okay, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कर सकते हैं. All you need to have is one internet. Okay, an internet backbone or any connectivity and a small browser. Okay, for Firefox हो सकता है, Chrome हो सकता है, Edge, Mozilla, anything. Okay, that's so simple. Okay, I'll also show you how people can grab your passwords. Okay, वो भी मैं थोड़ा सा दिखा दूंगा, and then we'll move on to OS and application attacks. Okay, if time permits, we'll also look at IoT. Okay, IoT attacks. All right, so defining cybersecurity, right? We need to have some definition, right? So basically, cybersecurity is protection of internet-connected systems. When I say internet-connected systems, it is internet is nothing but a network of networks. Okay, मेरा network आपका network connect करता है, it becomes a network. Okay, internet उसको कहते हैं. And the funny part is nobody controls the internet. It is so huge, right? It is millions and millions of networks, devices, machines, systems, servers. बट कोई कंट्रोल नहीं करता उसको, राइट? ये पहला सिस्टम है दुनिया में जो बहुत ही अजीब है. ओके, एंड उसका प्रोटेक्शन करना, दैट इज व्हाट साइबर सिक्योरिटी एंट्रेल्स, राइट? एंड यू वांट टू प्रोटेक्ट हार्डवेयर विच इज लाइक माय मशीन, माय लैपटॉप, माय डेस्कटॉप, माय सिस्टम, माय फोन, राइट? सॉफ्टवेयर, राइट? माय ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एप्लीकेशन में यूज कर रहा हूँ सिस्टम्स में, राइट? उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, एंटरप्राइजेस जो होते हैं, दे कनेक्ट देयर लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, देयर ऑफिसेज over to the internet. Okay, so they are using some networks within their system, within their house, right? Or within their offices, right? तो वो network को protect करना. Then you got programs, right? For example, banks, right? अब बैंक में क्या होता है, आप लॉग इन करते हैं, किसी कोई प्रोग्राम उनका एक्सेस करते हैं, right? Do you know one bank, like for example any bank, when you log into the bank first time, right? HDFC.com or any bank, SBI, you get a portal, right? That is basically called as the landing page, right? The first page जहाँ पे आप अपना password enter करते हो, ID enter करते हो, and you log into it, right? तो वो जो first login page आता है, that is basically connecting to 15 or 20 different servers, okay? Different domains, insurance होगा, right? Some loan वाला होगा, right? बहुत सारे कोई customer complaint होगा, contact us होगा, all these things, and all these things are different servers. Okay, ये servers इनको बोलते हैं subdomains. So you have sbi.com and then you got multiple subdomains inside that sbi.com, right? Now all these are different programs that are running. So you see this program part, right? So one domain initially is running multiple programs. Okay, similarly अगर हम किसी भी बैंकिंग, किसी भी न्यूज एजेंसी की बात करें, ndtv.com for example, right?
अभी एनडीटीवी क्या करता है, आपको लाइव फीड दिखाएगा, कुछ दिखाएगा. सो लेट मी जस्ट क्विकली शो यू दैट. Okay, so you got this ndtv.com, right? Now you got these links here, right? Every link is probably one server, okay, or multiple servers, okay. Is this clear? Any doubts, any questions? No, sir. No, Okay, sir. okay. Go ahead. Now, all right, Clear, right? clear. So, okay. Now, अभी हमने क्या सुना है कि जो जितने भी वेबसाइट्स होते हैं, they capture our browsing habits, they capture our profiles, they want to target us and then they want to see us कि हम कैसे कैसे चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, मैं किधर क्लिक करता हूँ, किधर नहीं क्लिक करता हूँ, right? So ndtv.com it's basically a banking news website, right? But इसमें बहुत सारे trackers होते हैं. Okay, Google for example ये tracking system है. It is, if I open Google, okay, all right, and if I just open, if I go to more tools, I'm using Firefox by the way, okay, web developer tools. Okay, तो मैंने क्या किया, ये तीन लाइन इधर है, open application menu, okay, and then I click this. इसमें नीचे जाके more tools में there's a link called web developer tools. So you have all these inspector, console, dev networks and everything here, right? But that is not the question, right? So what I'm doing is I'm opening Google, right? And then let's see what happens, okay? So इसको मैं refresh करता हूँ. So you'll see these things happening over here, okay? Now मैंने एक website open करा, okay? But you got multiple things that are opening up, right? All these are basically trackers, right? ये ट्रैकर क्या करते हैं, दे आर बेसिकली मॉनिटरिंग अस कि हम कैसे कैसे चीजें ओपन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, राइट? एंड इफ यू सी मोस्ट ऑफ दीज डिवाइसेस और दीज लिंक्स दैट आर देयर, ओके. सो यहाँ पे यू विल सी दीज आर लाइक कुकीज, ओके. ये कुकी क्या करता है, ये मेरे ब्राउजर में आके बैठ जाता है एंड देन इट सॉर्ट ऑफ कीप्स ग्रैबिंग थिंग्स, व्हाटएवर आई डू, व्हाटएवर आई एम क्लिकिंग. फॉर एग्जांपल गूगल में जाके या एनडीटीवी में जाके, फॉर एग्जांपल if I like cricket, okay, so if I open cricket, right, so let me just enable this browsing thing here, okay. So you see this, all these things, these cookies are now getting generated, okay. Get, ये जो get है, ये method है, status is 200 means success, okay. Whatever I try to open, वो open हो गया, तो this is HTTP process, okay. 404 आएगा तो website not found, okay. So this is something to, ये interviews में पूछते हैं बहुत सारा, okay. So now there are two methods, get and post, okay. Get is what the request goes out for, ठीक है, कि जो user है वो कुछ request करता है, बोलता है मुझे get करो, right, get me the website for example. So you'll see these get things, right. Post is basically the first thing that started up, right. So get and post methods होते हैं, but you'll see so many things here, right. Home remedies, all these things are cookies, okay. ये cookie क्या करते हैं, ये मेरे system में आके चुपचाप बैठ जाते हैं and they basically target me, my browsing habit, or they note down what I'm doing, right. It's like a small file, okay. This is a very small file here, right. This file, और ये उसका link है, okay. So it sits there and it watches कि मैं किधर click कर रहा हूँ, and then you got analytics people sitting in NDTV or say Google or somewhere, right? They keep creating profiles. So next time जब मैं इस ndtv.com पे जाता हूँ, right? This thing or this cookie, it quickly tells कि ये जो आया था ना, इसने ऐसा किया था, right? For example, if you go to LinkedIn, right? LinkedIn में क्या होता है, आपके connections बनते रहते हैं, right? People whom you want to talk to, या जिसको जिसका प्रोफाइल आपसे मैच करता है, ओके, वो उसका फ्रेंड आप बना लेते हो, उसका फ्रेंड बन जाते हो आप, राइट. बट उसमें क्या है, लिंक्डइन में और इसमें इट कीप्स नोटिंग डाउन व्हाट यू डूइंग, ओके. आप किधर क्लिक कर रहे हो, कितनी बार क्लिक कर रहे हो, किसका प्रोफाइल आप एक्सेस कर रहे हो. सो वो उसी तरह से आपको लिंक्डइन पेश करता है, ओके. इट सर्व्स लिंक्डइन और that portal in the same way that you are browsing it, right? Or ये technology is also being used by the e-commerce companies, right? Amazon.com, for example, right? If you open Amazon, you'll see, if you buy 10 jeans, for example, okay, 10 jeans खरीद लिया आपने, blue, green, red, or all sorts of colors, right?
you'll start seeing jeans everywhere. Okay, एनडीटीवी में आपको जीन्स दिखाएगा, राइट? वो कोई फ्लिपकार्ट पे जाओगे उधर जीन्स दिखाएगा, राइट? yahoo.com google.com पे जाओगे तो उधर जीन्स के एड्स दिखाएंगे, बिकॉज दे आर टारगेटिंग अस. They are basically noting down how we are browsing things. Okay, so this is something, some technology or some way they are these big companies, right? Twitter है या Google है या ये लोग हैं, ये सब फ्री में कुछ नहीं दे रहे हैं, right? Google is like a free search engine, right? Where I can search anything, right? But nothing is free, right? They are generating money of me, right? And they're basically trying to see कि मैं किधर किधर जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ. Okay, so this is a little bit of a tracking thing for you, right? A lot of times Google ने मना भी किया है, बैंक के कोर्ट केसेस हुए हैं Google के ऊपर, where they said कि हम लोगों को ट्रैक नहीं करते, right? But you can still see all these things are going on. Okay, any doubts, any questions? Sir, so can we delete these cookies from our end? Because We can do that. Yeah, sometimes they are forcefully telling us to accept the cookies. So Correct. what we are accepting over there actually? We are going to give the permission or? No. So by default, cookies are created by default. Okay, the user has no control. Okay. When you do a get command or when you get is like ये जो get मैंने किया था, get is like getting me the NDTV or some website. Okay. So by default, they've designed these browsers in such a way that ये cookie आपके system में आके चुपचाप बैठ जाता है. Okay, and it keeps noting down whatever you open, whatever you click. Okay. So it is sitting there. It's like a spy. Okay, वो चुपचाप बैठा है उधर, right? It does not. It does not do any damage to your system or anything. It is a good file. Okay, but the only thing is it's a very small file. कुछ KB का size है इसका, ऐसा भी नहीं कि बहुत सारा size है, but वो कुछ छोटा सा history में आपके बैठ जाता है, right? So a good practice to do is every time when you want to browse something, right? First of all, browsing should always be done through a private window. Okay, ये जो private window है, right? Firefox or everyone provides you this private window, right? इसमें क्या है, जितना भी browsing होगा वो secure होगा. The browser is securing your browsing habits or whatever you want to see, right? So things will still be going on to them, right? Google के पास फिर भी जाएगा, पर encrypted जाएगा. Okay, so you cannot see some, right? Right, sir. Right. Okay, so we've got two questions. Is cookie mandatory for sessions? Mahakant, yeah, cookies by default बनते हैं. Okay, this is how the internet works. Okay, you cannot say कि मुझे cookies या ये जो cookie आ रहे हैं मेरे system में ये नहीं दो. You cannot do that. Otherwise वो website ही नहीं खोलेगा. Okay, so that is how they've designed things, right? Web 1.0, 2.0 जितने भी ये versions आए हैं नए, so they sort of inbuilt these things inside the browsing habits that we are doing, right? And ये cookie चुपचाप आके बैठता है मशीन में, right? Whenever next time again NDTV आप खोलते हो या Flipkart खोलते हो, तो Flipkart का cookie फटाफट उसको सबसे पहले बता देता है, बोले महाकांत ने ये किया था, ऐसा किया था, ये इधर क्लिक करता है, ये उधर क्लिक करता है, इसको वो ज्यादा दिखाओ. Okay, right? And there's another question saying sometimes they ask for access location for certain sites. Yes, exactly, right? A lot of times they go deep, right? ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ browsing click या mouse देखेंगे, right? They would look for your locations, right? कि ये किधर है, गुजरात में है कि बॉम्बे में है कि दिल्ली में है कि अहमदाबाद में है, right? So these guys are profiling, right? वो big data है ना, वो big data का आपने सुना होगा. That big data has a huge amount of data, GBs में data है, and they are analyzing it, right? And they are analyzing people कि वो कितना browsing करते हैं, कैसे browsing करते हैं, क्या क्या करते हैं, किधर किधर जाते हैं, कहाँ से login करते हैं, किस time पे login करते हैं, so they are analyzing people at a very high level, right? And they are doing it because they want to modify this. They sell this data, right? You would have heard Google selling data, right? So this data is sold. Okay, they're saying महाकांत है ना रात के 2 बजे बैठ के ब्राउजिंग करता है, okay, and वो जीन्स खरीदता है रात को, right? So they'll sell this data to everyone, right? फ्लिपकार्ट को भेजेगा, इधर उधर जितने भी e-commerce वेबसाइट्स हैं उसको देगा, right? And और भी देगा वेबसाइट्स को, right? So you'll start seeing that information or those kind of information
जो आप ज्यादा ब्राउज करते हो. Okay, so It's this is one. It's interesting to know this. Yeah. Yes, sir. Right. So and this is quietly going on, right? It is stealthy, right? We call it stealth. It is a silent thing that is going on behind our back, and we are very happy saying, oh, मेरा browser बहुत fast है, internet बहुत fast है, everything is working fine. Okay. So this is something to note for everyone, right? जब भी आप browse करते हो, कुछ भी free Google कुछ free नहीं दे रहा है. Okay, it is generating money of you. आपसे वो data ले रहा है, and it is generating that money from your data. Okay, and on that part, do you know जब आप मॉल जाते हो, okay, so वो लड़की या लड़का आपका सिंग सर दो, okay, you'll get a prize. Okay, फॉर्म मॉल में देखा ना, शॉपिंग मॉल में, right? So you fill in your name, you fill in your mobile number, okay, maybe your address, right? That three things जो आप भरते हो, your name, your mobile number and your home address, उसका cost is 15 rupees. Okay, so they sell this information to marketing agencies, and then you get calls, spam calls मिलते हैं ना कि सर क्रेडिट कार्ड खरीदो, right? How do they know your name? How do they know your number? Okay, so that is how they know this, right? And everything is costly, or it is cost for a cost. Okay, तो 15 रुपए का वो उसने किया, right? If it is doing for 15 for 1 lakh people, right? So they earn 15 lakhs. Okay, और मे बी अगर वो ड्रॉ है, लकी ड्रॉ है, आपको एक प्राइज भी मिला, 1 लाख का प्राइज मिल गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ओके, सो दे आर अर्निंग 15 lakhs and they're just giving 1 lakh. Okay, is this clear? Any doubts? Yes, sir. True. Clear, sir. Clear. Right. So next time, whenever you go out to anywhere, in a bank, in a shopping mall or anything, right, never ever give out your mobile number or details or names or anything, right? It is not mandatory, it is not legal, right? Nothing is required. आप मना कर सकते हो, बोले मैं क्यों दूं, right? A lot of times जब आप shopping करने जाते हो, you are paying through your credit card or your cash, right? तो वो जो बैंकर उधर मॉल में खड़ा होता है ना, वो बोलेगा सर मोबाइल नंबर बताओ, राइट? वाई बताओ? यू कैन ऑलवेज टेल हिम कि हम नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ, आई डोंट वांट टू टेल यू. ओके, अनदर थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर वाज, सो दिस वेबसाइट, ओके, एंड वी जस्ट डाइग्रेसिंग इट, मैं और डिटेल में जाऊंगा, राइट? So this is HTTP website. Okay, now internet पे there are forms, there are different protocols. Okay, two insecure protocols, HTTP and FTP. Okay, most other protocols are secure protocols. What this means is, जब भी आप data भेजते हो या कुछ open करते हो या कुछ access करते हो, right? It can be seen by others. Okay, now imagine you are sitting in your house. Okay, आपने कोई वाईफाई लगाया घर में, जियो का है या एयरटेल का है या किसी का है. Now that Wi-Fi is also being monitored by some attacker. Okay, and you are logging into this amitjaku.com, for example. Okay, this website, right? It is using HTTP. HTTP का मतलब है in clear text. Okay, clear text basically means English language में जो भी आप टाइप करोगे, जो भी आप भेजोगे, जो भी रिसीव करोगे, वो सबको दिखेगा. Okay, let me give you an example here. Okay, so again I go to this 3 bars. Okay, web developer tools. Okay, ये वेब डेवलपर टूल चला दिया मैंने. ओके, क्लियर? oops, sorry, I closed it by chance. Okay, all right, back to this, right? Now यहाँ पे if I log in, okay, admin 1 2 3 4, okay, and if I say enter, okay, so it इसमें अगर नेटवर्क में हम देखेंगे, so I can see what is happening inside, right? So this is what the attacker sees. Alright, आप लोग लॉग इन करोगे, right, from your machine, right? वो मशीन मैंने पासवर्ड गलत दिया था, so this form came back again, right? But this is what is happening at the end, right? ये post, get, right? I told you, right? Post is something that is sent, okay, and get is something that is received by the user, right? तो get मैंने किया था कि भाई ये फॉर्म मेरे को लेके आओ, right? फॉर्म आ गया, right? I posted something here, right, which was admin and some password. Okay,
तो अगर आप यहाँ पे जाओगे you can easily see what is happening here, right? So this is that application जो मैंने click किया था, this was sent from my machine, okay? Then you can see this host amitjaku.com, okay? ये हुआ था, right? एक request आया था, okay? And you can also see user agent, okay? The user agent is my details, my machine, the user's machine, okay? So I'm using Mozilla, okay? 5.0 Windows machine, Windows 64-bit है, x64 OS है, right? And it is Firefox 107.0, okay? So this information is easily captured by the attacker अगर वो बीच में बैठा है. This process is called man in the middle, okay? So let me just type this and tell you. ओके सो आई एम बेसिकली सिमुलेटिंग दिस यूजर है, वो यूजर बैठा है कहीं पे, राइट, अपने घर में, ही इज ट्राइंग टू एक्सेस सम वेब रिसोर्स, कोई बैंक होगा, कोई वेबसाइट होगा, कोई लॉगिन करेगा, राइट, वहां पे बैठा है, तो और उसके बीच में अटैकर है. सो अटैकर इज बेसिकली लुकिंग एट हिज ट्रैफिक कि उसने क्या एंटर किया, क्या गेट किया, क्या सेंड किया, राइट. सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी इजीली बी लुक्ड एट, राइट. सो यू कैन ऑल्सो सी द रिक्वेस्ट कि अच्छा इसने ये यूजर कुछ फॉर्म मंगाया था, ओके. सो दिस इज व्हाट द अटैकर सीज, ओके. एंड अगर जो यहाँ पे मैंने यूजर नेम एडमिन पासवर्ड एंटर किया था, तो दैट कैन बी सीन इन द रिक्वेस्ट पार्ट, ओके. सो यू कैन सी admin 1234 and admin, right? Now this is happening because it is HTTP clear text, सब कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में, जो भी जिस भी लैंग्वेज में मैंने एंटर किया था, अगर अरेबिक होता तो अरेबिक लैंग्वेज होता, तो क्लियर टेक्स्ट होता, ओके. So you would see these things in very clear text, right? So this is how why the web or internet is very insecure, okay, and it is very easy to attack anyone, okay. अगर आप किसी को अटैक करना चाहते हैं, you have certain skills, और वो skills बहुत ज़्यादा नहीं है, it is not rocket science, okay, it is very easy, okay. Then you can easily attack somebody, you can capture this information, right. कुकीज की हमने बात करी थी, so this is, इसमें कुकी नहीं बनती, HTTP में कुकी नहीं बनती, okay. Let me just show you something else. So it's same as a Wireshark, right, sir? It is capturing the plain text things. No, sir, this is not even Wireshark. It is it is something like Wireshark, which is capturing the network traffic. Right? Wireshark भी यही करता है. It captures something, right? Wireshark तो tool हो गया. Now imagine you don't have a tool, right? आप किसी के ऑफिस में गए और आपके पास कोई टूल नहीं है. Okay, so you can just open this process and then see what is going on. Through browser itself, we can find. Correct. Through the browser attack. Okay. Yes. So then we can say that Yeah. Sorry for the disturbance, sir. Yeah. Please carry on. Yeah, so telnet, telnet is also insecure, right? Correct, right? Telnet हो गया, FTP हो गया, जितने भी पुराने जमाने के प्रोटोकॉल्स हैं, okay? जो जब भी प्रोटोकॉल्स बनाए थे, they were basically meant for communication. HTTP was meant for communication, कि मैं आपको कुछ होस्ट करूं, and you can, if I host a website, for example, and I want to communicate with you, you can easily see that. If I want to use file transfer protocol, right? I can transfer files. Right? Telnet भी है कि मैं किसी पे remotely I can log in and then browse and then access somebody else's machine, remote machine, right? So Telnet, HTTP, FTP, all these are insecure protocols, right? इसमें आप पासवर्ड एंटर करोगे, यूजर आईडी पे एंटर करोगे, वो सब कुछ दिखेगा उसको, right? The only thing is नए टूल्स बनते चले गए हैं, वायरशार्क बना गया. So again, it is very difficult for people जो HTTP use करते हैं, right? So let me just show you, right? We sort of saw this either request में, right? अगर HTTP website है तो easily you can capture or see what is going on, right? But if it is HTTPS, for example, okay, the net banking, right? तो यहाँ पे देखा आपने एक वेबसाइट खोली है मेरी और इतने सारे ये इसने ओपन कर दिए, बूटस्ट्रैप, राइट, गूगल, आप यहाँ पे देखोगे गूगल का एक कुछ ये स्कैनर चल रहा है इधर, राइट. सो थिंग्स लाइक दीज आर देयर, राइट. अब इसमें मैं अगर यूजर आईडी एंटर करता हूँ 1 2 3 4 5, ओके, एंड इफ आई से कंटिन्यू, ओके, सो इट्स इलीगल, सही नहीं है, राइट. पिन मैं देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके.
So if I log in, right, यहाँ पे post get and the whole thing I get again, right? It is technology ऐसा ही है, right? I get something, I post something, right? तो मैं post में जाता हूँ, right? So now you can see some IDs, something happening here, okay? Request में response में कुछ नहीं होगा, but request में जहाँ पे भी इसने ये device enter किया था, right? वो आगा password जो है it is something like this, जो मैंने password 1 2 3 4 5 6 7 8 enter किया था, okay? Now that is encrypted. Now this cannot be broken, okay? अगर मैं चाहूँ कि ये मैं somehow if I copy this, okay, if I copy this value, password ये user ID का password है, but उसको break करने के लिए it will take billions and millions of years, okay? So that is why it is always advisable to use HTTPS or SSL or SFTP or secure FTP or secure HTTPS, right? Otherwise, this is what would happen. Your passwords, your ID, अगर आप कहीं पे browse कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो सब कुछ सबको दिख जाएगा. Okay, anybody जो attacker है, right? If he is monitoring you, if he is browsing you, he'll be easily able to access your systems. All right. Any questions? Any doubts? Yeah, some has raised the hand. Yes, Raviraj sir. Do you want Yes, to sir. ask any question? Yeah. Sir, by mistakenly it happened. Sorry for this. Okay. No problem. And I think Arjun Pandit has raised the hand. Any question? Okay, sir. Go ahead, sir. Next. Okay. All right. Yes. Okay, so I just showed you the insecure part, right? This is where we are, right? Programs, इसको data बचाना है, right? अपनी information और data को भी बचाना है, right? So the protection of internet connected system, right? Any system that is talking to some other network, right? उससे protect करना है, right? And what do you want to protect from? Data breaches. Data breaches are basically I have a system, I'm connecting to the internet, and somebody else is trying to access it from outside illegally. ओके लीगली भी एक्सेस करते हैं लोग बिकॉज आई एम सिटिंग एट होम फॉर एग्जांपल और मैं अपने ऑफिस के नेटवर्क में जाना चाहता हूँ राइट आई वांट टू प्रिंट समथिंग आई वांट टू एक्सेस समथिंग तो वीपीएन और थ्रू सम लीगल वे आई कैन गेट इनसाइड बट इफ इट इज बीइंग डन थ्रू अ इलीगल वे वेयर आई एम नॉट ऑथराइज्ड ओके एंड देन आई एम एंटरिंग समबडी एल्सेस नेटवर्क राइट दैट इज डेटा एंड आई एम टेकिंग द डेटा ऑल्सो राइट वो डेटा डिलीट कर देता हूँ डेटा कुछ हार्म कर देता हूँ कुछ डिस्ट्रॉय कर देता हूँ राइट दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द डेटा ब्रीच. Similarly, I showed you the man in the middle attack, right? उसमें क्या है? If I am able to see somebody else's ID and password, then I can assume his identity. Okay, Gmail में मैं login कर सकता हूँ उसका अगर मुझे ID password पता चल जाएगा, right? So and then I can do some damage also, right? I can write an email saying अगर मुझे जैसे for example किसी कॉमर्शियल कॉर्पोरेट का मुझे आईडी मिल जाएगा राइट सो easily I can write a bad email to his boss or something or maybe to everyone there right saying मैं रिजाइन कर रहा हूँ बहुत बेकार कंपनी है right and I'm assuming somebody else's identity so this way of or this technology or this thing is called identity theft right where you assume somebody's identity and you harm people or you try to do malicious thing right unauthorized access as I told you right कोई machine है किसी का right which is authorized only for 10 people or to a group of people right और उस group में से कोई और बाहर वाला भी उसमें access करता है so that becomes an unauthorized access or external access that is somebody is trying to access from outside okay right now how do you do this right breaches हो रहे हैं identity theft हो रहा है damage हो रहा है unauthorized access भी है right so you use something called as a combination of process practice and technology so they call it PPTs okay cyber security में protection के लिए क्या है बोले PPT है okay so cyber security definition it's protecting internet connected systems like hardware software networks programs data information right data can be anything right by the way मेरा सेल्फी हो सकता है मेरा सॉन्ग हो सकता है कुछ भी हो सकता है जो मेरे लिए यूजफुल है right and you protect it from data breaches thefts damages unauthorized access using this protection of practices technology right technology can be a tool right practices can be a way or a process right and a process is defined by people saying this is how we'll work okay right now there are different type of cybersecurity there right so Mahakant has another question right in every working organization they're using firewalls that means they are monitoring so they
so they monitor our browsing history or bank details as well. So Mahakant, firewall जो है ना, it is basically a device, a specialized device which is sitting between you and the internet. Okay, if you're working in an organization, right? तो उसका दो काम है, एक तो एक्सटर्नल ट्रैफिक को ब्लॉक करना. फायरवॉल में क्या करते हैं, जैसे फायरवॉल है ना, उसमें हम स्पेसिफिक पोर्ट्स ओपन कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल आई कैन से कि जो भी मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग बैठे हैं उनको एक्सटर्नल ब्राउजिंग HTTPS ब्राउजिंग एनेबल कर दो. ओके, और बाकी सब कुछ बंद कर दो. सो दे कैन नॉट डू FTP, दे कैन नॉट डू XYZ थिंग्स, दे कैन नॉट चैट, राइट, वो सब बंद हो जाएगा. ओके, सो ओनली वन से प्रोटोकॉल will be open, right? Because firewall से basically it's like controlling traffic. Okay, number one, right? Number two use of firewall is every device on the internet has to have a private IP. Okay, private IP मतलब मेरी मशीन को एक IP होना चाहिए. Okay, so let me show that to you as well. So this is a command prompt. Okay, so if I do IP config, okay, so you can see this, I get a 192.168.29.51 IP. Okay, now ये IP address जो है version 4 है. Okay, उससे ऊपर ये IPv6 है, IPv6, right? So there are two versions of IP addresses going on, IPv6, V4, right? They are replacing this thing because हर एक machine को, as I told you, has to have a unique IP address on the internet to be live, to be working over there. कोई भी डिवाइस बोलो आप, प्रिंटर होगा, कैमरा होगा, कोई किसी का मशीन म्यूजिक सिस्टम होगा, किसी का एनी होगा, आपका एंड्रॉइड फोन है, राइट? if it does not have a unique IP, it cannot work on the internet. Simple. That is rule number one. Okay, and you see this default gateway. This is the machine. This is my Jio 5, right? I'm using Reliance Jio. इधर से मेरा ट्रैफिक जाता है बाहर और इसी के थ्रू आता है, राइट? सो दिस गाय नोज के मेरा जो मशीन है 29.51 इधर है. ओके, सो दिस इज इंटरनल, मेरे घर के अंदर ये सब बात हो रहा है. ओके, नाउ लेट मी शो यू एक्सटर्नली व्हाट इज हैपनिंग. Okay, so externally, if I type this, what is my IP.com? Okay, so let me just type this as well. Okay, so you can click this link. Okay, ये secure है, ऐसा कुछ नहीं है. Okay, it gives you this 49.43 dot something this IP. Okay, right? So this is the public IP जो दुनिया को दिख रहा है. Okay, so ये external IP है. So private IP मेरा ये 192 series था, right? And public IP मेरा ये है, right? So now you know the difference between public and private, right? Private IP is internally in my house, okay, and this is externally somewhere. Okay, आप लोग try कर सकते हो. You can do IP config, see what you get. Some of you might get 172 series, somebody might get 10 dot something series, somebody might get 192. Okay, वो सारे के सारे उसको बोलते हैं private IPs. Okay, internally. Okay. And if you do what is my IP.com, you get a public IP version 4. Okay, so I'll wait for just few seconds. आप लोग try कर लो. Okay, anyone you can type and tell me कि आपको exactly क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है. Yeah, Mahakant, I'll come to that also. थोड़ा सा wait कर लो. Okay, clear? हाँ, so Nandan is getting 49 series IPs, right? So 49 हम लोग लोकेट भी कर सकते हैं. ओके, आई वर्क फॉर द साइबर सेल. मैं पुलिस वालों के साथ उत्तराखंड में आई हेल्प देम सॉल्व केसेस. ओके, किसी का फोन चोरी हो गया तो उसको जियो लोकेट करो. किसी को फोन आया तो वो लोकेट करो, या किसी को धमकी वाली ईमेल आई, राइट? तो ईमेल किसने भेजी, किधर से भेजी, राइट? उसकी जियो लोकेशन फॉर एग्जाम्पल. या किसी का लैपटॉप है, वो लैपटॉप लेके आए, एक्यूज्ड है, राइट? वो लैपटॉप में से मेमोरी में से इंफॉर्मेशन निकालना, ऑल दैट मैलिशियस थिंग्स, राइट? आई आल्सो वर्क विद द पुलिस गाइज, तो उसमें करते हैं, राइट? सो नाउ यू गॉट दिस 49 सीरीज. ओके,
Yeah, so Nandan is now 59.psn, right? So that is your IP address, right? Now you can also do a reverse thing, right? इसको copy कर लो आप, okay? इसको right click करके copy कर लो, right? And there's a website called IP2 location. Okay, ये बहुत ज़्यादा accurate नहीं है, but it basically tells you your IP address. Okay, so if you type here, right, 49.series IP अपने आप वो ले लेगा, right? It is coming out to be Maharashtra, Mumbai, right, which is basically Reliance or Jio. Okay, Bombay, right? Now this is happening because मेरा जो gateway है, I'm using Reliance Jio. Okay, उसका जो gateway है, जब वो बाहर जाता है, network से बाहर जाता है, right? सब कुछ अभी ट्रैफिक जो है वो नेटवर्क पे BSNL इसके जियो के नेटवर्क पे फ्लो कर रहा है, राइट? बट व्हेन इट गोज आउट टू द इंटरनेट, राइट, देन इट शोज कि अच्छा किधर से निकला, तो किधर से निकला, वो मुंबई से निकला है. ओके, एनीवन कैन टेल मी हिज आईपी, हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं. So basically it is showing, sir, ISP details, right, sir? ISP details, geolocations, right? The physical location, right? And also and मैं मेरा ये 3 स्टोरी बिल्डिंग है. ओके, सो आई एम एट 12 मीटर्स. ओके, सो ये सारी की सारी चीजें जब हम कोर्ट में पेश करते हैं, जो जज को देते हैं, तो ये सारा उस टाइम पे यूज होता है. बोले ये सेकंड फ्लोर पे था सर, ये देखो 8 मीटर पे था. या this was the height at which he was browsing or he was sending out email. Okay, so Mahakant has 175 series. Okay, so let's try this. Diya has also shared her IP. Okay, Diya का try करते हैं. Okay, 103 240 208.223. Okay, Gujarat, Rajkot, right, Diya? Correct, sir. Correct. Okay, right. So and you also get these coordinates, right? इधर कुछ ID codes भी हैं और ये सब हैं. So it is very very accurate. Most of the time it is accurate. But पुलिस वालों के पास कुछ और भी tools हैं जो cyber cell होता है. They are very very accurate. They can actually tell your location by 100 meters or some meters. Okay, उतना accurate रहता है. Right. So ultimately we are doing passive attack or passive informations that we are getting. We are gathering. Yeah. So this process is called information gathering. Yes, Okay. sir. Okay, anyone else? किसी को नहीं मिला IP? Okay. Right, one is left, 175. .128.2. Okay, so let's try this. So this is also Rajkot. Okay. Yes. U Telecom India Private Limited is the ISP. Okay. Wow. आपके घर में कोई और होगा, but majorly it is this, right? So and it is a DSL broadband cable fiber है. Okay, so Wow. right, so this and this information is again used against you. Okay, so say for example आपने किसी को mail भेज दिया. Okay, so that email also can be traced, and then that IP can be located saying आप राजकोट में थे, आपने इधर इस टाइम पे ये भेजा. Okay, so it is so dangerous. So never ever do things which is malicious. पुलिस वाले सब पकड़ते हैं. Okay, so whatever you do, so it can be caught, and you can see this time, date, everything is there. Right, so this is what we do, right? We gather information, we put it in some एक template होता है पुलिस वालों के पास, उसमें डाल देते हैं, right? And then the advocate and judges and these guys they look at it, right? Mobile IP. So Nandan has a question: how can we trace mobile IP? Right? It does not change actually. It like if you're traveling, right? Mobile is like you keep traveling, you drive your scooter, तो आपके पास जेब में mobile है, right? So this is mobiles are connecting through cell towers. Okay, so every tower has 1,000 or some 2,000 limits. Okay, and they triangulate you. Okay, so that is how you can trace machines or trace these mobile devices. Laptop भी ऐसा ही होता है, right? Laptop अगर Wi-Fi से connected है या किसी के थ्रू connected है, so you can switch. Okay, so mobile पे भी अगर आप whatismyip.com करोगे,
So Nandan, you can easily find out what is your mobile IP. It is a device, okay? It's a small computer. RAM है, memory है, CPU है, and it is sending and receiving traffic, okay, data, network, right? So only thing is उसमें थोड़ा specialized कर दिया उसको, उसमें voice भी enable कर दिया है, voice applications डाल दिए हैं, right? उसमें speaker है, right? And you using it to chat or to talk, right? So that is why you call it a mobile or a mobile phone, okay? Any questions? You can still try, okay? Any doubts? Any questions? No, sir, it's clear. Okay, let me try just once. Okay, so this one is from Arizona, 55. Oh, sorry, 59 tha. Okay, my 59, 94, 32, 78. Okay, this is Karnataka, Bangalore. Who's Okay. there? So Nandan is from Bangalore. Probably he is using proxy. Sir, so in case of proxy. Oh, sorry, so he's using BSNL. Okay. Yeah. So BSNL ka gateway jo hai, it might be the exit part would be Bangalore. Okay. Right. You might be sitting in Delhi or somewhere. Okay. So yeah. Delhi में होगा, right? But BSNL का जो exit point है, right? I'm always telling you, जहाँ से भी वो external जा रहा है, right? It would be Bangalore. It would be from Bangalore, and Bangalore में उनका major data center होगा. Yes, sir. Okay. Any other question before we proceed? Sir, yes, sir. Yeah. Please unmute and tell your question. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कभी आपने सुना होगा कि एनजॉर्क के द्वारा आप किसी का भी लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं. वो एक आपको लिंक बना के देता है और वो जब तक एक्टिवेट रहता है सर्वर, तो आप किसी का भी लोकेशन ट्रेस कर सकते हो. अभी हम यहाँ पे आईपी डाल रहे हैं 59.94.32.78. अगर मान लो कि हमारे पास उसका आईपी एड्रेस नहीं पता हमें और हमने कोई भी सोशल मीडिया में उसको मैसेज भेजा है या तो लिंक भेजी है, तो वो कैसे काम करती है सर, उसके बारे में थोड़ा पता है. Sure. So that is basically phishing. उसको phishing बोलते हैं, right? So मैं जब कोई भी SMS आता है मेरे पास या कुछ आता है, तो मैं वो लिंक पे क्लिक करता हूँ. Okay, so सर्वर्स में लॉग्स बनते हैं. Okay, everything is created. हर एक चीज में अगर मेरा माउस कहीं पे डबल क्लिक करता हूँ, कुछ ब्राउजर ओपन करता हूँ, कुछ इंस्टॉल करता हूँ, कुछ WinZip इंस्टॉल करता हूँ फॉर एग्जांपल, या मैं Adobe Acrobat इंस्टॉल करता हूँ. So everything is created. There's a log created. Okay, that log is saved in servers machines or systems onto that system, right? तो वो जो है वो source देखता है कि ये source किधर से आया. So then they come to know your IP address. Okay. Yes sir. For example, मैंने जो NDTV खोला था, तो NDTV को मेरा source IP पता चला होगा, 49 series या whatever that was, right? उनको वो पता चल गया होगा, बोले इसने इस टाइम पे यहाँ से क्लिक किया, देहरादून से क्लिक किया है या दिल्ली से क्लिक किया है. तो मैं भी एक बेसिकली एक लिंक बना दूं और मेरे पास भी वो लॉग मेरे सर्वर में पड़ा है, तो मैं ये ip2location.com में वो डाल के देख सकता हूँ, अगर स्क्रिप्ट बना दूं. पर उसके लिए आपको DNS डोमेन नेम्स आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, राइट? नाम होना चाहिए ना सिस्टम का या कोई डोमेन का, abc.com और समथिंग. तो यू हैव टू सम डोमेन्स एंड होस्टिंग. हाँ, तो उसको आप यूज करके देख. या एब्सोल्युटली. Okay, so it works both ways. Yeah. Okay. Any other question? Anyone tried जिसका नहीं चल रहा हो और? So sir, in case we use the proxy from, let's say we are getting connected with the Russia or any other country, in that case if you check, it will show that server only, or that's okay. Yeah, absolutely, it will do that. Let me just show that to you. Right? अभी तो ये है नहीं, सिस्टम नहीं है, right? So it is something like this कि ये मेरा it will hide my IP. Okay, so it basically अगर मैं बाहर से जाके देखूंगा या कुछ करूंगा, so I can use things like these, IP vanish, NordVPN, some private VPN, और ये क्या करते हैं, I can choose to be in China for example. तो मेरा जो ट्रैफिक होगा, it will go to China first,
उधर एक प्रॉक्सी सर्वर होगा, वहां से एग्जिट करेगा इंटरनेट पे। ओके, सो जो भी ट्रैफिक मेरा जैसे NDTV है या gmail.com है या गूगल है, इफ दे आर रिकॉर्डिंग माय लोकेशन, तो उनको लोकेशन मेरा चाइना मिलेगा। दैट इज हाउ दीज थिंग्स वर्क। ओके, तो प्रॉक्सी सर्वर इज बेसिकली समथिंग सिटिंग बिटवीन यू एंड दैट रिसोर्स, दैट वेब रिसोर्स जो आप ब्राउज करना चाहते हो। राइट सर, ओके ओके। ओके, सो दीज आर लाइक एप्लीकेशंस, आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ती है, एंड इट इज ऑल्सो अ रिकमेंडेड वे, राइट, कि आप ये IP वैनिश या साइबर होस्ट या कोई भी एक एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करो एंड देन आप चूज करो अपनी लोकेशन, राइट। सो यू वुड हैव सीन इन मूवीज, वो बोलता है ना, वो किसी को आप ट्रेस करते हो, बोले ये लोकेशन चेंज कर रहा है। ओके, सो दैट इज अ वेरी वेरी ग्लैमरस वे ऑफ शोइंग दैट, बट इतना हाईफाई भी नहीं है, राइट, बट यू कैन चेंज योर लोकेशन टू बी समथिंग एल्स। तो कई बार आप जब ट्रेस करते हो, if the attacker is शातिर आदमी है, वो काफी learned है, right, so then he can change it, right. As an example, I'll show you, I'll tell you एक केस हम लोगों ने सॉल्व किया था, where हरिद्वार में एक वो सेठ जी को मेल आया कि आप इतना इतना दो, अदरवाइज विल किडनैप योर सन और डॉटर और व्हाटएवर, राइट। तो उसका ईमेल आ गया, तो उसका आई वाज कॉल्ड टू द थाना कि भाई आप आओ सॉल्व करो। सो व्हेन वी लुक एट दैट, इट वाज फ्रॉम चिली, ओके, साउथ अमेरिका, राइट। सो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग, सेइंग चिली में कैसे आया, राइट। तो नाउ पुलिस वालों के पास सब कुछ एक्सेस है, दे कैन सेंड आउट वन ईमेल एंड देन इजीली यू कैन फाइंड आउट कि उसके बैंक में कितना पैसा है, उसका लोकेशन किधर, IP जो ISPs हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, या जो अमेजन है या जो एयरटेल है या रिलायंस है, वो फटाफट आपको रिप्लाई देते हैं बिकॉज पुलिस का ईमेल है, राइट। सो व्हेन वी फाउंड आउट देयर वाज समथिंग इनसाइड इट, जहां से वो उसको पता चला कि ये प्रॉक्सी यूज कर रहा है। ओके, सो दैट प्रॉक्सी वाज फॉर्चुनेटली इन इंडिया, दैट सर्वर वाज इन इंडिया, राइट, एंड वो सर्वर से फिर रेज किया था इशू, राइट। सो दे टोल्ड अस हिज एक्चुअल IP। सो व्हेन यू टॉक अबाउट प्रॉक्सीज, राइट, वो प्रॉक्सी भी आपका IP नोट करेगा बिकॉज वंस यू आर गोइंग आउटसाइड, राइट, आप बाहर जा रहे हो जब भी, राइट, so you are first connecting to that proxy, right, and then that proxy is sending you outside. Okay, so things like these can happen, and in cyber mein easily it is very easy, right. So I'll just type and tell you. Yes, of course. So proxy server also will give your identity. Right. So if you have authority, right, legal authority, तो प्रॉक्सी आपको यूजर आपका बता देगा कि बोले ये इस टाइम पे इसने कनेक्ट किया था, मेरा प्रॉक्सी सर्वर यूज किया था और इसने चाइना लोकेशन यूज किया था। सो योर लोकेशन माइट बी अमरेली और अहमदाबाद और गुजरात, राइट। वो प्रॉक्सी सर्वर सब कुछ बताएगा। सो लॉग्स अगेन, साइबर में एक रूल है, राइट। दैट रूल इज, अगर आपके बिल्डिंग में आग लगेगी, राइट, सो यू शुड सेव टू थिंग्स, राइट। वन इज पीपल, योर स्टाफ मेंबर्स, द सेकंड इज लॉग्स। ओके, बाकी सब जल जाने दो, सब कुछ आपको लॉग से पता चल जाएगा। ओके, सो लॉग्स इज सो इम्पोर्टेंट, एंड लॉग एनालिसिस सिस्टम्स और लॉग एनालाइजर्स बहुत सारे होते हैं, राइट। जब भी कोई अटैक होता है IT सिस्टम, IT टीम को तब पता चलता है जब वो अटैकर आपका सिस्टम में, नेटवर्क में अंदर आ जाता है। ओके, नाउ दे डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या हुआ, किधर गया, सो दे स्टार्ट लुकिंग एट लॉग्स, राइट। लॉग्स आपको सब कुछ बताते हैं। ओके, Yes, true, sir. True. all right. Any question before we continue on types of security? Okay, right. Now from a cybersecurity perspective, from a career perspective, for example, right, try to get more and more information or knowledge as deep as possible. For example, अगर आप network में हो तो network security में जा सकते हो, where you can secure people's networks, data centers या offices. तो आपको networking, आपकी knowledge जो है वो बहुत तगड़ी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, right? You might be knowing, scripting or other things, C++, Java, Perl, Python, Pascal, right? But networking skills, again, depending on your thing, right? Another domain or cybersecurity domain or career domain is application security, where how applications are working, how programs are working, right? वो सारा का सारा जानने के लिए, right, .NET या Python या Java या C
राइट, ये सारा का सारा बहुत जरूरी है, राइट. सो अगेन देन यू कैन हैव अ करियर इन एप्लीकेशन सिक्योरिटी वेयर यू आर debugging things, you are finding out bugs, or when I say bugs, it is cyber security bugs, right? कि वो प्रॉब्लम उसके एप्लीकेशन में मैं डेटा कैसे निकाल लूँ, right? So things like these can be found, right? Then another third domain is information और data security, right? ये क्या है, जैसे मैंने सेल्फी खींची मेरी, okay, that is my it is my own selfie or my data, right? तो मेरे लिए वो बहुत प्रेशियस है, right? उसको सिक्योर करने के लिए देयर आर वेरियस वेज ऑफ डूइंग इट, राइट. एनक्रिप्शन है, क्रिप्टोग्राफी है, और बहुत सारे टूल्स हैं, राइट. तो वो सारा का सारा लर्न करना, वो इंश्योर करना कि भाई हम डेटा सिक्योरिटी, डेटा को सिक्योर करें, राइट. तो वो एक अलग ही डोमेन है. ओके, सो ऑफिस में आईटी पीपल और आईटी ऑर्गेनाइजेशंस जब होते हैं, राइट, तो आईटी टीम में, सिक्योरिटी टीम्स में यू गॉट पीपल हु आर जस्ट डूइंग डेटा सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन. ओके, then you got operation security. Operation security is day to day security, right? रोज आप एक कंपनी है, 1000 people है, right? उनके 1000 to 2000 machines है, उसमें यूजर को कुछ क्वेरी आता है, राइट, आई वांट सम एप्लीकेशन टू बी इंस्टॉल्ड, और मेरा मशीन नहीं काम कर रहा है, या मेरे सिस्टम में वायरस आ गया, थिंग्स लाइक दिस. वो वाला सारा का सारा काम ये ऑपरेशन सिक्योरिटी वाले करते हैं. ओके, डे टू डे ऑपरेशंस, रेगुलर फ्लोर पे जो काम होता है ऑफिस में. Okay, so again, huge potential or huge opportunities for people who are interested, right? By the way, हर एक रोल का, नेटवर्क सिक्योरिटी का, एप्लीकेशन का, इंफॉर्मेशन का, ऑपरेशंस का, हर एक का प्रोफाइल अलग है. ओके, यू नीड एप्टीट्यूड, और आपको मजा आना चाहिए काम करने में, तब आप जाके उसमें जा सकते हो. अगर आपको लोगों से मिलना पसंद नहीं है तो डोंट गेट इनटू ऑपरेशन सिक्योरिटी, राइट. बिकॉज उधर लोग आएंगे, बोलेंगे मेरा ये खराब हो गया, मेरा ये नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, right? If somebody likes to stay alone, like to stay quiet, चुपचाप बैठ के काम करना चाहता है, then operation security is not for him, right? Somebody who likes networks, okay, वो ब्रेक करता है चीजों को, देखता है कि नेटवर्क ट्रैफिक कैसे फ्लो करता है, इनबाउंड आउटबाउंड ट्रैफिक कैसे जा रहा है, आ रहा है, right? Then network security is good for him, right? Then there's something called as identity management. Okay, identity management is where you are giving access to people. Okay, so if you like that control, okay, कि मैं लोगों को कंट्रोल दूं और लोगों को कंट्रोल करूं, then this identity management domain is suitable for you, right? जहाँ पे क्या होता है, जैसे ही नया कोई यूजर ज्वाइन करता है कोई ऑर्गेनाइजेशन में, right, उसको कोई एक आईडी दी जाती है, right? It will be his employee ID or some user ID to get onto the network, to browse the internet of the office, or to access his emails, for example, or to use some browser, some intranet inside the office, right? तो आइडेंटिटी मैनेजमेंट वाले क्या करते हैं, उसको एक्सेस देने के लिए, उसको परमिशंस देने के लिए दे आर कंट्रोलिंग दिस. सो दिस आइडेंटिटी मैनेजमेंट इज अगेन अ ह्यूज डोमेन. ओके, अब 15-15 हजार, अभी आपने सुना होगा ट्विटर, लिंक्डइन, ये सारे के सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, इनमें 15-15 हजार, 20-20 हजार लोग हैं. ओके, एंड 1000 गॉट लेड ऑफ, राइट. तो इमेजिन कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है. ओके, उसमें हर एक को एक्सेस देना, और कुछ ग्रैनुलर लेवल पे एक्सेस देना कि ये ब्राउजर यूज करेगा या नहीं करेगा, या ये डेटा कोई मूवी देखेगा कि नहीं देखेगा, राइट, या ये डेटा बाहर भेज सकता है कि नहीं भेज सकता, थिंग्स लाइक दैट. उतने ग्रैनुलर डेटा, उतना ग्रैनुलर परमिशंस के लिए दिस आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज यूज्ड, राइट. देन ऑफ कोर्स मोबाइल सिक्योरिटी, राइट. आजकल क्या हो रहा है, द होल बिजनेस इज कंडक्टेड व्हेन पीपल आर मोबाइल, राइट. पीपल माइट बी ट्रैवलिंग टू क्लाइंट साइड से लोग इधर आ रहे हैं, राइट, या कोई आदमी ट्रैवल कर रहा है किसी सेमिनार में, किसी कॉन्फ्रेंस में, राइट. तो उस मोबाइल को चेक करने के लिए, या उन लोगों को चेक करने के लिए दिस मोबाइल सिक्योरिटी इज यूज्ड. ओके, देन यू गॉट क्लाउड सिक्योरिटी, राइट. दीज डेज मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, जब भी हम कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदते हैं, तो हम उसको 3 घंटे 4 घंटे यूज करते हैं मैक्सिमम, एट अ स्ट्रेच, राइट. एंड देन इट इज स्विच्ड ऑफ. ओके, वो स्विच ऑफ करके पड़ा रहता है, राइट. तो दिन में मैं 4 घंटे, 3 घंटे या 5 घंटे वो लैपटॉप यूज करता हूँ, राइट. एंड इट इज आइडल, इट इज वेस्ट, राइट. तो उसका कंप्यूटिंग पावर, सीपीयू, रैम, मेमोरी, ऑल दिस इज लाइक वेस्ट. ओके, और इट माइट बी 60,000 70,000 का उसका कॉस्ट होगा. ओके, बट इमेजिन इफ आई वांट टू, व्हेनेवर आई क्लिक समथिंग, राइट, आई गेट माई ब्राउजर, आई गेट माई वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, मैं उसको यूज करता हूँ. ओके, फिर मैं उसको बंद कर देता हूँ, एंड आई ओनली पे फॉर द टाइम that I use. Okay, so that is basically the cloud technology. It is like पानी, आप नल खोलते हो ना, तो आपको अगर 1 गिलास पीना है
आप एक गिलास पानी भरते हो, you don't keep the tap on, right? वो पानी गिरता नहीं रहता है, okay? Right? So you open the tap, you fill in one glass, you go away, right? After half an hour you come back, you again fill it, then you go away, right? So you only pay for that amount of water that you are using, right? इसी तरह इंटरनेट में भी ऐसा ही है, right? जितना आप क्लाउड यूज करना चाहते हो, क्लाउड में भी अलग अलग 3-4 प्रोसेस, 3-4 वो है, राइट? इट इज अगेन अ ह्यूज डोमेन, राइट? तो क्लाउड में क्या है, एक तो यूजर को एक्सेस देना, एप्लीकेशन की एक्सेस देना, दूसरा उसको इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सेस देना, तीसरा उसको एप्लीकेशंस की एक्सेस देना, राइट? किस तरह के वो यूज करना चाहता है, तो उसके लिए क्लाउड सिक्योरिटी वाले बैठे हैं, राइट? अगेन अ ह्यूज डोमेन, बिकॉज इंटरनेट तो रहेगा दुनिया में, राइट? वो कहीं जाने वाला नहीं है, right? And it is only increasing. It will always stay. It will be there for till the time machines are there, right? Machine रहेंगे तो इंटरनेट रहेगा, इंटरनेट रहेगा तो क्लाउड रहेगा, okay? So and then of course the last option is user awareness, okay? User awareness वाले क्या करते हैं, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो, so you get a mandatory course saying आप पहले ये सिक्योरिटी कोर्स करो. मोस्ट गुड ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, राइट, वो ये इस तरह के प्रैक्टिस, इस तरह के सिस्टम्स फॉलो करते हैं, ओके? तो उनके लिए ये यूजर अवेयरनेस कोर्सेज होते हैं, वेयर पीपल आर टॉट ऑन थिंग्स लाइक दीज, ओके? सो दीज आर सम ऑफ द डोमेन जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, राइट? People who are looking to move into cyber or looking to develop their skills on to cyber, you can select these things, right? Identity management, for example, or mobile security, or application where or networks where you start working on firewall, for example, right? तो इस तरह के जॉब्स आप टारगेट कर सकते हो, एंड देन नॉट जस्ट दीज जॉब्स, यू कैन टारगेट some other stuff as well, right? उसमें फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, और you can join some organization as well, okay? Any doubts, any questions? Clear, sir. Good to Okay. go. Okay. ऑलराइट, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं, कि ये तो मैंने बता दिया आपको कि जॉब्स तो बहुत सारे हैं, राइट? तो इसमें इंपॉर्टेंस क्या है कि हम जो अभी है ना, हमारा जो ये लाइफ, ये जो डोमेन है, डिजिटल एरा है, ओके? वी आर नाउ इन कन्वर्जन फेज. हमारे जो पेरेंट्स थे, हमारे जो अभी 20 साल, 50 साल, 40 साल पहले लोग थे, दे वर नॉट यूजिंग इंटरनेट, ओके? और पर इंटरनेट तो लाइफ तो चलता था, ओके? हम लोग जो हैं, या हमारे जो अभी आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, या जो आप लोग आ रहे हो, राइट, all of you have got machine systems, okay? So around 4.88 billion people around the world are using internet. This is October 2021, last year, okay? This is almost 62% of the world's population, okay? So almost everyone is almost, अगर 62 होगा, ये last year का डेटा है, right? अभी का डेटा माने तो ये बढ़ गया होगा, right? So almost around 80% people are there, and it is only increasing, it is not decreasing. More and more people are getting onto the internet. कोविड के आने से तो और सब लोग घर में वर्क फ्रॉम होम हो गया, तो उससे पीपल वो नॉट यूजिंग इंटरनेट स्टार्टेड यूजिंग इंटरनेट, ओके? More and more, so 2 million new users have again come online, right? Now we are coming online because we want to search, we want to browse, we email each other, right? We book a cab, we book a hotels, train tickets, air tickets, right? We're sending and receiving money, or ordering food, right? So you can imagine everything being done in a very simple way. अपने घर में बैठ के, अपने बेड पे बैठ के, मैं एक एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, फोन ओपन करता हूँ अपना, या लैपटॉप ओपन करता हूँ, एंड आई कैन जस्ट टेल देम कि भाई मेरा टिकट बुक कर दो, मैं राजकोट आ रहा हूँ, राइट? और या मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, राइट? सो इट इज बिकमिंग an era of digital era, right? So everything is being used, internet is being starting to being used, right? So हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर कॉन्स्टेंटली यूजिंग द इंटरनेट, वी आर जनरेटिंग डेटा. हम लोग जो है, वी आर द प्रोडक्ट, ओके? तो ये डेटा जो जनरेट हो रहा है, दिस इज बीइंग सेव्ड ऑन टू क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स. क्लाउड बेस्ड सिस्टम इज समबडी एल्सेस सर्वर, ओके? मैं खाना ऑर्डर करता हूँ, स्विगी को बोलता हूँ कि मेरा इधर ये लोकेशन है, ये इधर आईडी है, राइट? और इधर खाना डिलीवर करो, तो स्विगी डिलीवर करता है, बट आई एम जनरेटिंग दैट डेटा फॉर देम, ओके? Now this is one thing, right? Generating data, people are generating a lot of data, okay? Now apart from this, मेरा एक लैपटॉप है, मेरे 2 फोन हैं, या मेरा एक डेस्कटॉप है, right? So I have got multiple devices to be online, okay? Or and 99% of the time these devices are not secured, okay? They can be easily hacked, okay?
So these are two things which are coming out in this digital era. एक तो डेटा हम जनरेट कर रहे हैं, डेटा बाहर वालों के लिए जनरेट कर रहे हैं और अपने काम के लिए जनरेट कर रहे हैं बेसिकली, राइट? बट वो डेटा अटैकर्स भी देख रहा है, ओके? एंड सेकंड, मल्टीपल यूजर्स हैं, सिस्टम्स हैं, राइट? मोस्ट ऑफ देम आर नॉट 100% secure. Okay, let me just show you the state of internet that is there. Okay. Now we are talking, we are sending out emails, we are doing everything, right? This is a live threat map. Threat map is basically it tells you what is going on all across the systems, right? तो ये आपको देखेंगे बहुत सारे चीजें इधर उधर जाते हुए. So these are attacks that are going on right now. Okay, और ये live है. Okay, so Radware is an organization जो Radware के devices बनाता है. Okay, security devices बनाता है, right? So you'll see these attacks going on. Okay. So you can see last 1 hour का डेटा या लास्ट अगर 24 आवर्स का डेटा लेंगे, राइट? तो इसमें टॉप अटैकर्स यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, रशिया के हैं, नीदरलैंड्स हैं, चाइना है, यूके है, राइट? एंड दीज गाइज आर अटैकिंग दीज यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, कनाडा, सिंगापुर. ओके, एंड इफ वी सी के एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, सो दे आर यूजिंग यूडीपी फ्लड. ओके, 47% यूडीपी फ्लड अटैक्स हैं, टीसीपी फ्लड है, डीएनएस फ्लडिंग है, ओके, एचटीटीपी फ्लडिंग है, आईसीएमपी फ्लडिंग है, ओके. और इनको यूज करके दे आर यूजिंग दीज एक्सेस वायलेशंस, राइट? आई टोल्ड यू अबाउट एक्सेस वायलेशंस, राइट? किसी और की मशीन में घुसना. So 67% people or these attackers are doing this access violations. They are doing some injections. Injections basically, if we get time, I'll show you. Command injections होते हैं या SQL injections होते हैं, where you inject some malicious code and the system throws out something which it should not. Okay, user ID, passwords, for example, या information, right? जो उसको नहीं दिखाना है, तो इंजेक्ट आप करते हैं और वो बाहर फेंक देता है सेंसिटिव डेटा. ओके, एक्सप्लॉइट्स, ये अटैक्स हैं, ये अटैक हो रहे हैं, डेटा थेफ्ट हो रहा है 7%, एंड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है. सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ अटैकिंग पीपल, राइट? आईसीएमपी फ्लड फॉर एग्जांपल, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. ओके, सो आईसीएमपी में क्या होता है? आईसीएमपी प्रोटोकॉल है. एवरीवन नोज अबाउट आईसीएमपी, राइट? Yes, sir. ICMP is ping. Okay. Yeah, it's ping only. Okay. So ping हम करते हैं. Ping is a utility. Okay. Ping अगर मैं कहीं पे करता हूँ तो ping is like poking. Okay. So I can ping somebody and find out कि वो जिंदा है या नहीं है. Okay. So that system also pings me back. For example, if I ping yahoo.com, okay, so it replies back. Now ping में क्या है? It is a network utility that is there by default in all operating systems. Linux होगा, Windows होगा, Mac होगा, सब में है. Okay, so it's basically a network utility जो बताता है कि वो उधर वाला नेटवर्क जिंदा है या नहीं है. Okay, so I pinged yahoo.com, right? So by default 32 bytes of payload is sent to that server. Okay, and then it tells me this time कि कितना टाइम लगा. So 4 बार वो रिप्लाई करता है. Okay, so I can change this. Let me change it a little bit. -4 में करता हूँ. Right, -4 is IP version 4, by the way. Okay, so it earlier it was giving me this IP version 6 because Geo and YouTube or this Yahoo have moved on to IP version 4 and they are also with 6, right? But let's just talk about this. Okay, so ये number easy है देखने में, right? इसमें क्या है? IP version 4 का ping करा, right? 32 bytes of data by default, right? TTL is time to live. Okay. And it basically tells me कितना loss, packet loss होगा, कितना मेरा traffic का quality क्या है, right? So loss is 100%, which means loss is 0%, which basically means बहुत बढ़िया quality है, right? I am able to ping or I should be able to ping or access youtube.com very easily. Okay, and then it tells me some round trip times कि कितना time लगा मेरे को Yahoo तक जाने में और Yahoo को मेरे पास आने में. Okay, so is this clear? ये सही है? सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Clear. Okay, Sir. right. Now in between me and Yahoo, okay, there are some servers. Okay, there are systems. So if I do a tracer yahoo.com, okay,
तो ट्रेसर इज लाइक हम ट्रेस करते हैं, हम पैकेट भेजते हैं, तो एक मेरे सिस्टम से निकलेगा, रिलायंस जियो के बॉम्बे सेंटर पे जाएगा, बॉम्बे सेंटर से दुबई जाएगा, डीप सी फाइबर से जाएगा, वहां से फिर अमेरिका जाएगा, राइट, या वहां से कहीं यूरोप में जाएगा, राइट, और जहाँ पे फाइनली जहाँ पे यूट्यूब होगा या yahoo.com होगा, वहां पे पहुंचेगा। एंड इन बिटवीन एवरी हॉप यू सी, दीज आर हॉप्स, राइट, ये 30 हॉप्स दिख रहा है, दीज आर हॉप्स, दीज आर समबडी एल्सेज राउटर्स। ओके, राउटर्स का क्या काम है, एक ट्रैफिक को दूसरे ट्रैफिक से ज्वाइन करना। तो मेरे घर के ट्रैफिक से रिलायंस जियो को एक राउटर ज्वाइन करेगा, रिलायंस जियो बॉम्बे किसी और को भेजेगा। ओके, तो एंड यू सी दिस रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट, राइट। तो राउटर्स क्या करते हैं, उनको सब जगह से कनेक्टिविटी रहती है, ओके, बट नॉट ऑल द टाइम, राइट। सो विच इज व्हाई इट ट्राइज टू सेंड सम डेटा, राइट, बट देन इट फेल्स। ओके, तो इंटरनेट पे पीछे पीछे ये होता रहता है, राइट। समटाइम वी फील अरे यार इंटरनेट बहुत स्लो है, ओके, इट इज नॉट वर्किंग वेरी वेल, इट इज नॉट फास्ट, बट इट इज नॉट फास्ट बिकॉज राउटर्स जो हैं, जो सिस्टम्स मेरे लगे हैं, जो ज्वाइन कर रहे हैं मेरे को और दूसरे youtube.com या yahoo.com को, वो बेसिकली टाइम आउट हो रहे हैं। सो यू सी दिस, इट वाज टाइमिंग आउट, नाउ इट रीच्ड, ओके, सो इट फाउंड आउट सम 210, राइट, एंड नाउ इट इज क्विकली कनेक्टिंग, राइट। सो दैट इज हाउ इंटरनेट वर्क्स, पीछे पीछे, ओके, बैकग्राउंड में ऐसा कुछ होता रहता है। सो इफ यू ट्रेस एंड यू सी दिस इन 16 hops, or it took 16 routers for me from my machine to reach yahoo.com. Okay, आप भी ट्राई कर सकते हो, just you can, I'll wait for a few seconds, okay, just open your command prompt and do tracer or anything, any राजकोट का कोई IP या कोई any flipkart.com or anything that you like. Yes, you can do traceroute for the any IP or any websites, so that you Yeah, will yeah, get. yeah. Okay, everyone done? Anyone facing problems? ये छोटी छोटी यूटिलिटीज हैं, फ्री यूटिलिटीज हैं, ओके, दे बेसिकली टेल यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन और दे गिव यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके। Right, sir. Okay, right, now we're talking about ping, ICMP, right? Sir, ICMP, yeah, yes sir. what about NS lookup? NS lookup is, I'll tell you NS lookup also, okay, but for now just check if this is okay or not. Okay, this is fine, sir. Right, now I'll be turning this good utility, right? Ping is a good utility, it tells me whether the other guy is alive or not, okay. So ping -4, okay, -t अगर मैं करता हूँ, right, by default we looked at here, right, 4 बार ये reply करता है, okay, it is designed to only respond 4 times. If I do -t, okay, it becomes unlimited, okay. So you'll see it is going on and on till the time I command this ping to stop, okay, ये चलता रहेगा, okay. So this is how you can convert it into a bad thing, okay. Now अभी ping में क्या होता है, या any server, if you open a website or if you open something, right, that server spawns a thread, छोटा सा एक process spawn करता है उस user के लिए, for every user it allocates a small location, a computing thing, right, CPU, memory, RAM उस user को दे देता है कि आप इसमें ब्राउज़र, इसमें काम करो, ओके। अ लॉट ऑफ टाइम यू वुड हैव सीन, जब आप 12th का रिजल्ट आप देखते हो तो सर्वर स्लो हो जाता है, राइट। तो सर्वर के पास इतने सारे कनेक्शंस बन जाते हैं कि उसका सीपीयू, उसका रैम, उसका हार्ड डिस्क, सब कुछ छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे यूजर्स यूज कर रहे होते हैं, राइट। एंड दीज आर लाइक थ्रेड्स, okay, which is why when you reboot the system it becomes fast, because वो सारे के सारे threads जो हैं, processes जो हैं, वो फिर मर जाते हैं, they are killed, and the whole system is again fresh, right, and then again these threads rise, right. तो अभी इसमें क्या ping मैंने किया, so that system is supposed to respond 4 times or do some response, right. So it will allocate some CPU, memory, some RAM,
and then ask that user to saying are you okay or not, are you happy or not, things like these, right? तो ये इस तरह का होता है. -t लगा दिया तो अनलिमिटेड करेगा. Okay, now by default by rule that guy has to reply back. अगर मैं YouTube को -t करता हूँ तो हमेशा रिप्लाई करेगा, right? I can again convert it into even more malicious things, right? I can say -l 300. Okay, so you'll see this. ये जो पेलोड मैं भेज रहा हूँ इसको YouTube याहूट को, ये 300 बाइट्स हो गया है, राइट? So this thing and we can increase this also. Okay, so 1500 कर सकता हूँ मैं इसको, so it becomes 1500. Now by default yahoo.com is supposed to reply back to me with 1500 only. It cannot reply back with 32 bytes. Okay, so this thing is called a malware. Okay, a lot of time we think malware exe file है, binary है, executable है, right? ऐसा नहीं है. Okay, anything that is malicious और वो आपके सिस्टम को हार्म कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, करने वाला है, right? That is a malware, right? Malicious software. Okay, so this is basically a malicious script. Okay, इसको मैं ये एक बैच फाइल में डाल सकता हूँ या कहीं किसी पीडीएफ में डाल सकता हूँ, and I can send that PDF to the system saying आप प्लीज चेक करो इसको. Okay, so this is how you can convert a good utility into a bad utility. Okay, so and इसको अगर मैं किसी भी तरह किसी की मशीन में डाल दूँ इस स्क्रिप्ट को, right? And वो कितना भी बढ़िया एंटीवायरस डालेगा, एंटी मैलवेयर डालेगा, he can scan it, right? But this is like English language. There's no exe file there. Ping.exe is already there inside the operating system. उसमें Microsoft का stamp है. Okay, so you cannot delete ping.com or ping.exe, right? और उसके आगे ये कमांड है, right? So now if you Sir. Hello. Yeah. Am I audible, everyone? Yes, sir, you are audible, but Yes, sir left, right? Sir, are you there? somehow we lost the contact with sir. Yes, we lost the contact. Na? Okay, let me contact him again. Akashdeep sir, are you there? Yes. Yes, sir. Just a minute. Sorry, sir, I got disconnected. Yeah, no issue, sir. Please continue, sir. Okay, so I was talking, where did I go off? Okay, so I was talking about this ping.com, right? So we can convert this into a malicious thing. We can convert it into something that is malware, right? Even if I scan it with a very good antivirus or anything, right? I still cannot figure out or somebody cannot remove this. Okay, so now just let me show you something else. So, sir, by default, 300 bytes ping will be there, right, sir? By default, 32 is there. Oh, 32. Okay. If 32, we change, but I'm controlling it. I'm controlling it. I change it to 300 first, then I change it to 1500 first. Right, Right. sir, So right. yeah, this is converting a good thing into a bad thing. Okay. Right. So Right. that is why. Right. Now there's a website called Looking Glass. Okay. So let me just share this and show it to you. Okay, now Looking Glass क्या करता है? It collects information from all ISPs, internet service providers, and shows you how infection or how these malwares are spreading. Okay, so right now you got two botnets. Okay, botnet क्या करता है? Botnet is basically a network of bots. Okay, bot का मतलब है somebody or some machine under somebody else's control. Okay, तो इस टाइम पे सैलिटी एंड मोबाइल दो एंटीवायरस और दो वायरस वर्ल्ड में प्रोपोगेट कर रहे हैं, फैल रहे हैं. ओके, एंड दीज आर लाइक लाइव अटैक्स.
these are like per second, the infection is 2 or 1 milliseconds. Okay, so slow hai, but still it can go up and down, right? And the countries you will see this, इसमें India, Egypt, China, majorly ये 2-3 countries हैं. Okay, now why are these so high? Because majorly हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मशीन खरीद लेते हैं, फोन खरीद लिया, एंड्रॉयड फोन खरीद लिया या कोई लैपटॉप खरीद लिया, राइट, और उसमें एंटीवायरस नहीं डालते. ओके, या कोई लोकल उसमें पर्सनल फायरवॉल नहीं डालते. वी स्टार्ट ब्राउजिंग. ओके, और डिफॉल्ट मशीन यूजर क्या करते हैं, जो वेंडर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, लिनक्स है, या जो भी आप कोई ओएस लगाएंगे, राइट, उसमें सिस्टम्स जो है वो मेजरली डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं. Okay, which is like everything is open, everything is running fine, or everything is common. Okay, but if I don't want some specific protocols, for example DNS नहीं चाहिए मुझे, HTTP नहीं चाहिए, वो हमें बंद करना पड़ता है, right? That process is called hardening the operating system. Okay, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, बोले काम हमारा इंटरनेट चल गया, बस चालू हो गया, सही सही है, सब कुछ सही है, right? Which is bad. Okay, so if I just hide this, okay, so you'll see a lot of these green and some other stuff, right? So यहाँ पे अगर हम browsing करके देखें, right? So Karachi, Pakistan, okay, Sality, this is the malware that is moving around, right? They're using Pakistan Telecom, okay? So यहाँ से ये browsing ये फैल रहा है, and it is only increasing. It is impacting somebody else, okay? Now if I go here, okay, ये China, Ukraine, these regions, जहाँ पे मेजर अटैकर्स, मेजर हैकर्स बैठे रहते हैं, ओके, ये इधर बहुत शांत है. ओके, नाउ बिकॉज दीज, इनके कंट्री में क्या है, इनके कंट्री में ऐसा रूल है कि जब भी आप सिस्टम्स खरीदते हैं, दे आर ऑलरेडी हार्डन्ड. जब भी आप फोन खरीदेंगे, इट इज हार्डन्ड बाय डिफॉल्ट बाय द वेंडर. ओके, इंडिया में अभी ऐसा कुछ रूल नहीं है, एशिया में मेजरली ऐसा रूल नहीं है, पाकिस्तान में ऐसा रूल नहीं है. ओके, सो विच इज वाई यू सी थिंग्स लाइक दीज हैपनिंग. ओके, कराची है. Okay, so this is again, the location is Reliance Jio का किसी का phone है, right? It is having this malware, and that malware is attacking somebody else. Okay, so that is why, or that is how it is always said कि जब भी आप कोई नई मशीन खरीदोगे, उसको पैच करो, उसमें एंटीवायरस डालो, उसमें पर्सनल फायरवॉल डालो, राइट? या अगर आपका फोन है तो उसमें भी सिक्योरिटी डाल के रखो. ओके, राइट? And ऐसा नहीं है कि मेरे फोन में ही रहेगा, इट कैन बी ऑन एनीवन्स सिस्टम, राइट? सो लेट्स लुक एट दिस, राइट? ये यहाँ पे कोई भी लैंड नहीं है. ओके, दिस इज अफ्रीका. यहाँ पे लोकेशन इज अननोन बिकॉज मोस्ट प्रॉब्ली दिस इज अ शिप. ओके, और ये शिप जो है ये ट्रैवल कर रहा है. ओके, वहाँ पे एक फोन है, या वहाँ पे एक मोबाइल है, या वहाँ पे एक लैपटॉप है, विच इज इम्पैक्टिंग अदर्स. ओके, सो इट इज सो डेंजरस. ओके, तो ये जो बॉटनेट्स हैं, इट इज योर सिस्टम बिकम्स अंडर कंट्रोल ऑफ समबडी एल्स. ऑलराइट, so that is why this spreading of malware, or these systems that are spreading are so very dangerous. Okay, all right, any doubts, any questions? Sir, this website giving us all the hints, so why could not we prevent and stop this things? सर वही प्रॉब्लम वही है ना, अभी इंटरनेट पे कोई लॉ नहीं है, राइट? नोबडी कंट्रोल्स द इंटरनेट, राइट? यू कैन हैव अ कंपनी सेइंग दिस इज व्हाट वी फाउंड आउट, राइट? ऐसा कुछ हो रहा है इंटरनेट पे, ये देख लो, राइट? तो ये सब देखने के लिए मिल जाएगा, राइट? बट कोई सेंट्रल एजेंसी नहीं है, वो हो भी नहीं सकती, बिकॉज एवरी कंट्री इज हैविंग सम अदर स्टफ, राइट? चाइना बोलेगा मेरा लॉ लगाओ, राइट? अमेरिका बोलेगा मेरा लॉ लगाओ. तो ये सब कंट्रीज का ही इंटरनल फाइट होगा, राइट? और वहां पे जाके दीज थिंग्स आर देयर, राइट? फॉर एग्जांपल अभी वर्ल्ड कप आने वाला है, राइट? सो यू कैन सी दिस फ्रॉम चेक पॉइंट. ओके, सो अटैक्स जो हो रहे हैं वो चेक पॉइंट से हो रहे हैं. रशिया इज अटैकिंग टर्की. ओके, सिंगापुर से अटैक हो रहा है. चाइना इज अटैकिंग ताइवान ओवर हियर, राइट? ये ताइवान को अटैक कर रहा है, एंड दीज आर साइबर अटैक्स. ओके, we also saw, right, Sweden से you see this attack going on. Okay, Argentina को attack कर रहा है. Okay, so these attacks basically simulations, or they're just converting into GUIs, right? But actually these are scanning things that are going on. Scanners हैं, किसी का ping है, किसी का denial of service attack है,
किसी का अनऑथराइज्ड एक्सेस है, तो ऐसा कुछ हो रहा है. ओके, लेट मी जस्ट कॉपी दिस एंड शेयर एज वेल. Okay, any questions, any doubts? Clear, sir. Okay, so we also look at radware. तो radware हमने देखा था ये वाला, right? यहाँ पे you can see these protocols, ports, right? कितने कितने स्कैनिंग हो रही है. 22 को स्कैन करते हैं लोग, फिर 23 को स्कैन करते हैं, 80 को स्कैन करते हैं. Okay, 80 is HTTP, right? 443 is HTTPS. Okay, 445 is a SQL server, right? 8080 is some default जो लोग कई बार सिस्टम सेटअप करते हैं और उसमें अगर 2 वेबसाइट चलाना है तो 8080 कर देते हैं, right? So this is something that is scanned, right? So all these are scanned by the way. Okay, ये live सब कुछ चल रहा है. Okay, so ऐसा नहीं है कि people don't know, everyone knows what is going on the network. Okay, so now we are back here, right? So users generate data, that data is saved onto clouds. Okay, clouds जो है वो और multiple profiles हैं लोगों के पास, multiple machines हैं, right? And all those can be easily hacked, right? So which is why this digital age or this digital era that we have, it's a golden age for hackers. Okay, बहुत खुश होते हैं वो लोग ये डेटा देख के, right? Imagine train tickets, hotels, right? इतना सारा डेटा हम generate कर रहे हैं. 62% people world population last year was on the internet, right? So what is happening is every minute, this is internet minute, एक minute में internet पे, right? 174,000 applications are downloaded, 16.2 million text SMS भेजते हैं, 231 million emails एक minute में, okay? 60 seconds में, right? Google search होती है, 5.9 million Google searches होती है, okay? So imagine all these things, right? Snapchats है, videos watched, 167 million videos are watched, right? But imagine these things are happening and only 1% of this is leaked. Okay, I'm not even saying all this can be leaked, right? It can be hacked easily, right? But just 1% of this data is leaked to attackers. So imagine उनके पास कितना सारा data रहेगा. Okay, आपकी profile रहेगी, आपका information रहेगा, right? लोग खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, YouTube watch, right? Content Netflix पे देखते हैं, okay? फोटोज वीडियोस शेयर करते हैं इंस्टाग्राम पे, राइट? ट्वीट्स भेजते हैं 575,000 tweets, right? So imagine all this is happening and this is just 1 minute. Okay, अगर 24 hours का निकालें या 60 days का निकालें और उसमें से just 1% मैं बोलता हूँ कि उतना हैक हो जाता है, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा हैक होता है, बट आई जस्ट I'm thinking aloud saying no, just उतना ही हैक हो रहा है. Okay, so imagine what can be done. Okay, so which is why this digital era that we have is very insecure. Okay, so I'll quickly browse through this and then we'll go to something more interesting. So digitally, this is October 2021, right? Last year, right? Urbanization, population, इतना सारा हमारा लोगों का use हो रहा है, right? Social media जो है, that is only increasing, right? People are moving into social media. Everyone like of us, like 2-3 apps, LinkedIn, Twitter profile, Twitter, all these things are there, right? So social media का भी gain हो रहा है, right? So and attackers जो है वो लोग they watch, also the cyber police, they also watch कोई फ्लिपकार्ट पे क्या 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 करता है या फेसबुक पे क्या बोलता है या लिंक्डइन पे क्या बोलता है. ओके, ऑल्सो अ लॉट ऑफ टाइम्स ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं व्हेनेवर दे हायर पीपल दे डू अ बैकग्राउंड चेक. ओके, वो बैकग्राउंड चेक में देखते हैं कि इसने इंटरनेट पे क्या बोला, किस तरह का प्रोफाइल है इसका, क्या करता है. सो समबडी सर्चिंग फॉर ड्रग्स और समबडी सर्चिंग फॉर गन्स, ओके, और को किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है इंटरव्यू देने के लिए, राइट? तो उसको सबसे पहले उधर ही पकड़ लेंगे, बैकग्राउंड चेक में ही वो फंस जाएगा, बोलेगा ये आदमी ठीक नहीं है, ये कुछ भी गड़बड़ करता है. ओके, सो ऑलवेज बी वेरी केयरफुल व्हाट यू डू ऑन द इंटरनेट. डिजिटल फुटप्रिंट आपका एक बार बन गया तो वो रिमूव नहीं होगा. ओके, इट विल ऑलवेज बी देयर. ओके, लेट मी जस्ट शो यू समथिंग एल्स. ओके, सो दिस अ वेबसाइट कॉल्ड वे बैक मशीन. ये वे बैक मशीन क्या है? ये पुराने जमाने में जैसे जाते थे ना, आपके पास एक टाइम मशीन है
right? You can go back in time and then see what was happening, right? For example, if we just do facebook.com, okay, so facebook.com को कैलेंडर में मुझे बताता है कि एक facebook.com कितना कितना चेंजेस हुआ, कैसे कैसे चेंज हुआ, क्या क्या चेंज हुआ, राइट? लेट मी जस्ट चेक दिस. Okay, since it is live, it sometimes doesn't work very well. So the way it works is ये क्या करता है, snapshots लेता है. It is not working today probably, right? But ये 503 error आ गया ना, this is service not available. Okay, so this is also something for you to note, right? अगर successful होता तो 200 होता, okay, या fail होता या not found होता तो 404 error आता, okay? But ये क्या करता है, it collects information, okay, and it tells me कि NDTV कैसे कैसे change हुआ. So you can see this, it has 765 billion web pages, okay, over a period of time, okay. तो ये इस तरह से it tells me how things evolve, okay. So this is also something to use. Probably आप कल try कर लेना, okay. Let me just check once again. No, it doesn't work. All right. So what I'm trying to tell you is number of platforms, या कोई change करता है, या कुछ भी कोई post करता है, या किसी को कुछ भी लिखता है, किसी को कोई message भेजता है, it will always remain there. Even if you delete it, it can still be recovered. Okay, और पुलिस वाले वही करते हैं. Okay, 10 साल पुराना chat, 5 साल पुराना वीडियो या किसी का फोटो, वो सब कुछ ढूंढ के लेके आते हैं. Okay, and it is very easy to use Google and find out something secret. Okay, so Google है. Okay, you guys can also use open Google. Okay, for example, I want to search NASA and I want to search something secret. Okay, so nasa.org. Okay, file type PDF secret. Okay, so it starts to search only these things जिसमें PDF है, and it is having something secret. Okay, otherwise if I remove this thing, nasa.org या कुछ होगा, तो इसमें I don't know, so many इतने सारे searches आएंगे. So this process that I'm showing you is called Google dorking. Google को भी हम एक hacking system की तरह use कर सकते हैं, where we can basically see or check how this thing responds. So NASA का मैं अगर मैं चाहता हूँ, and if I say secret या NSA, okay, National Security Agency, okay, secret, file type PDF. Okay, so ये cryptographic history NSA के US के जो offices हैं, उनकी history का सिर्फ PDF मुझे information मिलने लग जाएगी. So this type of searching is basically a way of optimizing your search. आपको बहुत सारे search results नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ specific search मिलेगा, right? Otherwise क्या होगा, हम लोग search करते हैं, billions and billions of search आता है, right? आपको you can't click and see everything, right? So this is one thing to note of, right? And then you can figure out everything from Google. Google is also can be used against it. Cyber में क्या करते हैं हम लोग, जितना भी अच्छी चीज है उसको बुरा बना देते हैं. So what I'm trying to tell you is हम ये Google अच्छा था, right? It was something secret, right? तो ये इसको मैंने कुछ खराब बना दिया. Okay? Is that clear? Okay? So that is how attackers do this, right? अच्छी चीजों को लेके उसी को आपके against use करेंगे. Okay, any okay, all right. And one more thing, अगर मैं simple सा कुछ NASA search करना चाहता हूँ, okay, file type PDF, okay, so I get so many results. If I go to tools, okay, anytime past 24 hours, okay, so ये मुझे सिर्फ 24 hours के results दिखाएगा. Okay, so this is something to note of, right? Otherwise क्या होगा, पुराने जमाने का या कुछ पुराना history उसमें search में आ जाएगा. Okay, so this is something that you can think about when you are using browsing or doing some Google things. Okay,
Is it clear? Any questions? Any doubts? Interesting, sir. Clear. Okay. Right. So ये शॉपिंग का भी एक्टिविटीज अगर आप देखेंगे, so this is only increasing. Okay. Now शॉपिंग जब लोग करते हैं तो उसमें से क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, पैसा भेजना, पैसा रिसीव करना, all that is increasing. It is not decreasing overall. Right. So लोग ब्राउजिंग भी कर रहे हैं. They are sending out more. When people browse, they send out more their information. कि हम इधर बैठे हैं, हमने ये इधर क्लिक किया, हमने ये ओपन किया, हमने ये डाउनलोड किया. राइट. So that information is gathered. राइट. तो प्रोफाइलिंग मैंने बताया था जीमेल या गूगल पे. राइट. तो कंपनीज प्रोफाइल बनाते रहते हैं एंड पीपल आर बाइंग वीकली. उनकी शॉपिंग एक्टिविटीज इंक्रीज हो रही है. कोविड के आने से पीपल स्टार्टेड बाइंग ऑनलाइन मोर एंड मोर. राइट. तो और जितना ज्यादा ऑनलाइन हम इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा थ्रेट्स भी इंक्रीज होंगे. ओके. ऑलराइट. So can we stop for some time and then continue after 5 minutes? Sure, sir. We can take mini break, sir. Okay. All right. So I'll connect back in at 8:45. Is that okay? Sure, sir. Or else you can do one thing in your browser. You can start the timer also, so that participants can also see. I can disconnect and then आप share कर सकते हो if you want. Okay. Do we need to go for 5 minutes or 10 minutes, sir? 5 minutes. Okay. Sir. I'll share the timer. Okay, sir. Okay, participants. So we are going to take a break for 5 minutes.
Okay, welcome back. Sir, you can share your screen now, sir. Sure, sir. Sure. Okay. Now, whenever we think about cybersecurity, कि हम क्यों करेंगे? What is the goal? Why do we want to, do the cybersecurity or to think? और या कोई कहता है कि मेरा जो application है, it is very very secure. Okay, so what basically the vendors, so from a vendor perspective or a manufacturing perspective, they basically say कि हम तीन चीजें maintain करेंगे: confidentiality, integrity and availability. Okay, so this is basically a triad. एक three stool होता है ना, तो वो तीन palm तीन जो पैर रहते हैं, right? So this is basically a subset of cybersecurity. It is a triad, right? Anyone who says कि हम confidentiality maintain करेंगे, integrity maintain करेंगे, availability maintain करेंगे, और या हमारा application ऐसा करेगा, then it is supposed to be very very secure. And any vendor, any people जो भी security maintain करना चाहते हैं, वो ये तीन को पे फोकस करते हैं. Okay. So these three things basically are confidentiality. Confidentiality means protecting personal information, and it is protection from unauthorized access. For example, मेरा WhatsApp group है. I have 5 friends in that group. All right. And I post some message onto that group. तो only वो 5 people के पास या 5 लोग जो है मेरे friends हैं उनके पास जाएगा. Right. So that application should protect that. If I post that message onto 5, it should only go to 5. It should not go to 10 others. Somebody can leak it, that is different, right? But initially जो post मैंने किया है वो सिर्फ उसी के पास जाएगा. अगर इसको हम साइबर की लैंग्वेज में लेके जाएं, एंटरप्राइज लेवल पे लेके जाएं, तो एक क्लाउड सर्वर है. क्लाउड सर्वर बेसिकली क्या है? एक फिजिकल बॉक्स होता है, फिजिकल सर्वर होता है. उसमें वर्चुअल मशीन्स बहुत सारे चल रहे होते हैं, VMs, okay, instances होते हैं, right? And those instances are accessed by multiple people, right? That process is called, or that technology is called multitasking or multi-threading or allowing people to access it. So multi-tenancy होता है. जैसे किराएदार होते हैं ना, तो मल्टीपल किराएदार, एक होटल है उसमें एक रूम है या 10 रूम्स हैं, उन 10 रूम्स में मल्टीपल पीपल आर स्टेइंग, okay, and they are coming and going, right? So that is basically the tenancy part. Now, whenever data comes in from internet to one of that virtual machines, it should only go to that particular virtual machine. It should not go to virtual machine number 2 or 10 or 12, right? So that is called as confidentiality, right? इंटीग्रिटी बेसिकली एंश्योर्स डेटा इज रियल या एक्यूरेट है. अगर मैं अभी फोटो खींचूंगा, राइट, तो सेल्फी मेरा जो आएगा इट शुड बी एक्यूरेट, राइट? ऐसा नहीं कि मैंने फोटो खींचा और किसी को भेजा के देखो मैं कितना सुंदर हूँ, देखो मैं कितना गोरा हूँ, देखो मैं कितना काला हूँ, राइट? सो somebody should not tamper with it. Yeah, if somebody tampers with it, then that state has changed. तो जब मैंने फोटो खींचा, that is, imagine that is state number 0, okay? And if I send it or if I do Photoshop on it, right, मैं उसका बैकग्राउंड ब्लर कर देता हूँ, right? I make it more sharper, I make it more brighter, okay? So that state has changed. So integrity में, अगर integrity basically ensures that data जो है वो accurate है, right? And उसमें कोई unauthorized modification नहीं है, right? Or another example, if I send my resume to some consultant, okay, तो उसमें मैंने अपने 3 skills डाल के रखे हैं, right? And I send it to him saying, please जॉब ढूंढो मेरे लिए, राइट? सो दैट कंसल्टेंट लुक्स एट दिस, अरे यार ओनली 3 जॉब्स, लेट मी ऐड 4 मोर, ओके, अपनी तरफ से वो ऐड कर देता है. सो दैट इंटीग्रिटी ऑफ दैट डॉक्यूमेंट गेट्स वायलेटेड, ओके, वो चेंज हो गया, स्टेट चेंज हो गया, राइट? सो दिस इज बेसिकली called as integrity. So there are tools, there are network systems that allow or that don't allow integrity to be violated of system. Okay, and any questions, any doubts? ये definitions clear है? They're two in interviews. जब आप interview देने जाओगे, okay, so just be very very careful. Yes, sir. CIA is very important and it is the base of cybersecurity. Correct, sir. Correct, right? Right. The third pillar, that is availability. Availability is basically whenever anybody is authorized to access some resource and whenever he wants, उसको वो resource मिल जाता है. Okay, for example, Gmail है मेरा, okay, और मैं Gmail ओपन करता हूँ रात के 2 बजे या सुबह के 3 बजे या 4 बजे या दोपहर के 4 बजे, right? It is available all the time, right? So that is availability. So whenever if Google says
अगर आपको जीमेल चाहिए, हम आपको जीमेल लाके देंगे, कभी भी लाके देंगे। ओके, सो दैट इज अवेलेबिलिटी फॉर यू। सो ये 3 पिलर्स जो हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। अगर कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सिस्टम और कोई भी vendor, right, if he says that my product is very very secure, right, these 3 things is what he looks at: confidentiality, which is leaking information or not leaking information; integrity, which means ensuring data is safe, it is accurate, it is secure, right? And third is availability. Whenever I want that data to be available, it becomes available for me. Okay, and any doubts, any questions? It's clear, sir. Good to Okay, go next. okay. Yes. All right, right. Now, what are the goals? How do I, work on cybersecurity? The first thing is I have to recognize problems, right? For example, Gmail का अगर हम example देखें, so somebody, if I open Gmail और मेरा ID डालता है, so somebody is trying to break my password, right? So that I get an alert from Gmail, right? So that is how you identify and recognize problems, right? Then you can evaluate and analyze the problem as well, right? For example, you get a report from Gmail, राइट। वो जीमेल में बोलेगा आपको इस लोकेशन पे, इस आईपी एड्रेस से somebody is trying to access your जीमेल। अगर आप फर्स्ट टाइम, if you try now, अगर आप फर्स्ट टाइम किसी और की मशीन में अपना जीमेल खोलोगे, so you'll get an SMS on your phone। अगर उसमें जीमेल का एप्लीकेशन है तो वो बोलेगा कि unauthorized access और new login found from this IP location, right? The third is to treat and resolve problems, right? You can isolate your data, you can enable OTP on it, right? So even if somebody somehow got hold of your password, your Gmail password, वो ओपन तो कर पाएगा, राइट, बट उसके ओपन करने के लिए उसको OTP डालना पड़ेगा, राइट। एंड ओरिजिनल ओनर जो है, जिसके पास फोन है, उसको अलर्ट्स मिल जाएंगे, राइट। सो दैट इज हाउ you solve issues, right? So this identify, analyze, evaluate and treat, this is what is done in cyber security, right? जो भी लोग काम करते हैं, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो लोग यही करते हैं। दे आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, दे ट्राई टू एनालाइज इट, दे ट्राई टू इवेलुएट इट कि कितना डीप है, कितना है, एंड देन दे ट्रीट इट। Okay, for example, identify if somebody is trying to scan your system or somebody is trying to break your password, right? So this analysis and evaluation is done. This is done by another branch of cybersecurity called as digital forensics. Okay, forensics वाले क्या करते हैं? Investigations करते हैं, पुलिस वाले type होते हैं वो, right? They investigate how things are working or how a malware came inside, right? They don't work on the malware itself, बट प्रॉब्लम कैसे आया, कितना डीप है वो, किधर किधर आया, राइट? ऑल दैट इज वर्कड अपॉन, राइट? एंड देन द ट्रीटमेंट इज डन, राइट? ट्रीटमेंट इज कैन बी लाइक एक और फायरवॉल लगा दो, या अगर आपका एंटीवायरस अच्छा नहीं है तो एंटीवायरस बदल दो, राइट? चेंज सम अदर सिस्टम या यूज सम अदर सिस्टम। ओके, सो थिंग्स लाइक दीज कैन बी इजिली डन। ओके, नाउ देयर आर प्रॉब्लम्स आल्सो इन साइबर सिक्योरिटी। ऐसा नहीं है कि साइबर सिक्योरिटी बहुत अच्छा है, हमेशा सुंदर है, बट उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। Okay, one thing is called as vulnerability. Okay, vulnerability is basically a weakness in our protection efforts. There's a thing called asset. Okay, asset is basically somebody's, जो भी मेरे लिए चीज useful है, right, जिसकी वैल्यू है मेरे लिए, that is my asset, उसको मैं प्रोटेक्ट करके रखना चाहता हूँ, राइट? मेरा सेल्फी है, मेरा गाना है, या मेरा MP3 है, या मेरा लैपटॉप है, राइट? दैट इज माय एसेट, it is helping me do some work, right? So that vulnerability, if there's a protection effort or there's a gap in protection effort, that there's a vulnerability that exists, right? For example, there's some person is there and he's weak, उसकी immunity weak है, so whenever the मौसम changes, whenever there's a गर्मी से सर्दी आ रही है या बारिश आ रही है, he falls sick, right? So he's vulnerable to this weakness, right? That's how in cyber world, vulnerability is basically a defect in hardware or software, right? Which is typically has to be fixed by the IT team, by the security team. और अगर ये fix नहीं होती, then it is exploited by the attacker, right? So this vulnerability, सब लोग ये vulnerability search करते रहते हैं। Okay, so let me give you an example here. There's a website called cvss.com. Okay, cvssdetails.com. Okay, let me copy this and share as well.
ये क्या करता है, इट लिस्ट्स आउट ऑल वल्नरेबिलिटीज, राइट, गैप्स इन प्रोटेक्शन एफर्ट्स, राइट। तो ये एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, और ये क्या करता है, इट गिव्स देम स्कोर्स बिटवीन 0 to 10 और 0 to 10 9, राइट। लेट मी जस्ट रीसेट दिस, ओके। और ये क्या करता है, इट बेसिकली टेल्स यू दिस रेटिंग्स, ओके। ये रेटिंग के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि वेदर दैट प्रोडक्ट इज गुड और बैड, और हाउ गुड और हाउ बैड, ओके। 9 and 10 mean it is horrible, it can be easily hacked, right? So 0 and 1 means it is good, okay, and it is done for all vendors. अगर आप मैं vendor पे click करूँगा, so I can search for any vendor here, or I can search for any product here, right? दुनिया के सारे मर्सिडीज बेंज और सब प्रोडक्ट्स इधर आपको मिलेंगे, HP का मिलेगा, रेड हैट का मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट मिलेगा, राइट। सो यू कैन सी सो मेनी प्रोडक्ट्स हियर, ओके। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, जितने भी वर्ल्ड के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जितने भी वर्ल्ड में एप्लीकेशंस हैं, हर एक का एक रेटिंग इनको ये लोग देते हैं, ओके। सो एंड दे गिव इट आउट सेइंग, यू नो, प्लीज आप लोग जाके चेक करो एंड देन फाइंड आउट, राइट। अटैकर्स क्या करते हैं, दे बेसिकली एक्सप्लॉइट दीज थिंग्स, राइट। सो जितना ज्यादा ये 9 and 10 वाला सीरीज होगा, राइट, लेट्स जस्ट ओपन दिस, ओके। सो यू विल सी सीक्वल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट का सीक्वल सर्वर है, उसकी रेटिंग इन्होंने 9 दी है, ओके। सो लेट्स जस्ट ओपन दिस। सो अटैकर्स क्या करेंगे, दे विल टेक दिस, ओके, और उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे, दे विल ट्राई टू एक्सप्लॉइट इट। तो इस प्रोसेस को, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को, इसका एक आईडी देते हैं, CVSS आईडी बोलते हैं इसको, राइट। एंड उसमें क्या है, अगर आप देखोगे ये 9 जो है, व्हाई इज इट 9, बिकॉज उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी, वी टॉक अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, राइट, और इसमें एक्सेस कॉम्प्लेक्सिटी भी है, राइट। सो एक्सेस इम्पैक्ट इज कंप्लीट, विच मीन्स टोटल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर। SQL सर्वर है ये, ओके, दिस एप्लीकेशन जो हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, या जो हम स्टडी कर रहे हैं, राइट, उसमें पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर हो सकता है, रिजल्टिंग इन सिस्टम फाइल्स बीइंग रिवील्ड। सो इट इज अ हॉरिबल सिस्टम, इट इज अ हॉरिबल डेटाबेस, ओके, अगर वो पैच नहीं हुआ है तो, राइट। इंटीग्रिटी का, यस सर। एक क्वेश्चन है, जैसे ये CVID है, ऐसा कोई दूसरा कोई आईडी या इंडेक्स नंबर ऐसा कोई मिलता है किसी? हाँ मिलता है सर, मिलता है, वो हर एक का है। NIST है, ओके, NIST इज अनदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, इसमें ये लोग भी अपना एक सिमिलरली ये लोग सिस्टम लगा के रखते हैं, NIST, NIST बोलते हैं उसको, ओके। बट मोस्ट कॉमनली द CVSS इज यूज्ड, ओके। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, सब लोग अपना अपना नंबर लगा के रखते हैं, ओके। ऐसा नहीं है कि यही CVSS ही है नंबर 1, राइट। देयर आर लॉट ऑफ वेज इन विच यू कैन फाइंड आउट, और वो अगर वो कॉमन है तो पीपल कैन रिलेट सेइंग ये बिल्कुल ही हॉरिबल सिस्टम है या ये अच्छा सिस्टम है, ओके। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, अगर ये CIA हम लोगों ने पढ़ा था, CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, राइट, ये तीनों के ऊपर ये लोग कंप्लीट इम्पैक्ट होता है अगर वर्जन नंबर 9 है इसका, और इसमें SQL इंजेक्शन है, ओके। SQL injections are basically inserting malicious codes or malicious programs into a database, और उसमें queries डालते हैं, तो queries को malicious बना देते हैं, okay, and then that query basically throws out information which is not supposed to be thrown out, okay. For example, कितने टेबल हैं एक database में, या यूजर कितने बने हुए हैं, उस यूजर, उस कौन से यूजर को किस तरह का एक्सेस है, राइट, या उस डेटाबेस का वर्जन कितना है, okay. So things like these can easily be found out from this injection or this way. All right. So which is why they've rated it very high. All right. Any doubts? Any questions? आप खुद भी देख सकते हो, अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है, राइट, उसका खुद भी जाके आप CVSS देख सकते हो कि कितना रेटिंग है, क्या दिया है. You can just search it over here, right? WinZip for example. ओके, तो यहाँ पे ये इसका CVSS का ये नंबर आएगा, ओके, एंड यू कैन फाइंड आउट इसमें मल्टीपल बफर ओवरफ्लो है, कुछ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज हैं, राइट, तो वो आपको नंबर देगा, आपको डिटेल देगा उसमें, ओके। फॉर एग्जांपल ये 3.7 है, 3.7 इज रिलेटिवली गुड, बट ओवरऑल स्टिल WinZip इज नॉट सो गुड, ओके, उसमें प्रॉब्लम्स है, ओके, एंड दैट व्हाट प्रॉब्लम्स आर देयर, ऑल दोस कैन बी रिसर्च फ्रॉम दिस पार्ट, राइट. Metasploit
एक Rapid7 करके कंपनी है, they giving this attack tool, okay? और ये attack tool में जाके आप you can find out what is happening or how horrible or how good it is, okay? Any questions on this in detail? So, sir, what are the threshold value? I mean, minimum and maximum, which can be the good or which can be the, what is the range of this CVVS number so that we can? So ये है ना sir, the range is 0 to 1 is very, very good. Okay. 9 to 10 is very, very bad. So 10 typically अगर है तो बहुत खराब product है. इसका weighted average 6.2 है. Right. Okay. Right. So typically when you buy something, before buying you can check over here कि ये लोग क्या बोलते हैं या NIST क्या बोलता है. Right. So अगर उसकी rating से for example 2 years, that's good. Right. It is secure. Or if it is 8 or 9, then again problem. Right. For example, Windows 10 for example, okay? तो Windows 10 का अगर आप देखोगे यहाँ पे 2013 में रिलीज हुआ था एंड 2022 में आया है, राइट? इसमें डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कितना सारा हो सकता है, ओके? सो दिस इज द लेटेस्ट वंस. कोड एग्जीक्यूशन हो सकता है, ओवरफ्लो, बफर ओवरफ्लो, मेमोरी करप्शन हो सकता है, कुछ बाईपास हो सकता है, ओके? विच मीन्स अगर आपका आईडी है तो somebody can bypass that and get inside your system. इंफॉर्मेशन गेन हो सकता है, प्रिविलेज गेन हो सकता है, राइट? सो इट इज, ये इस तरह से जितने भी डिफरेंट अटैक्स हैं, they can categorize every operating system, they can categorize every application, और आप फिर इधर देख सकते हो कि कितना डेंजरस है या कितना अच्छा है, राइट? फॉर एग्जांपल कोड एग्जीक्यूशन है, which means somebody from outside can execute his own code, जो मैंने जैसे वो पिंग वाला दिखाया था. so somebody can get inside your system, execute that ping from your machine. so कई बार क्या होता है, botnets या zombies जो होते हैं, machines which are under control of somebody else. so ऐसे machines को easily ये Windows 7 या Windows 10 कर सकता है. so 2022 में 136 ways हैं उसको करने के लिए. so you'll see this 000 इधर कहीं पे, but कहीं पे red मिलेगा या कुछ मिलेगा, 4.6 मिलेगा, 5.1 मिलेगा या 6 मिलेगा. then you can study this and then do your own thing. okay, so यहाँ पे जाएंगे अगर, तो इधर हमें इजीली ये मिल जाएगा, ओके? विंडोज 10 का, प्रोडक्ट का, बाईपास का, या वल्नरेबिलिटी डिटेल्स का, वर्जन डिटेल्स का, राइट? सो इस तरह की चीजें आर यूज्ड बाय बोथ पीपल, ओके? सो नंदन हैज अ क्वेश्चन, कैन वी एक्सप्लॉइट any on the mentioned and how can we check if a system is affected or not? So affection, system being affected is different thing, right? This is basically a library, okay Nandan? So what they've done is, ये जो लोग हैं, इन्होंने क्या किया है, they scanned, they evaluated machines, operating systems, applications from a security perspective, और उसको एक stamping लग दे दिया, बोले ये इसका 6 नंबर है, right? If it is relatively insecure, if it is very, very insecure, they give it number 9, okay? 9 नंबर दिया उसको, right? जितना हाई रहेगा उतना खराब रहेगा, right? So if we buy something, or if we want to buy something, then we can easily check here, and then we can decide, okay? And Nandan has another question saying, can we use Metasploit to exploit this? Metasploit is basically a framework, Nandan. It is an attack tool, okay? उस attack tool में कुछ tools उन्होंने बना के रखे हैं, okay? So let me quickly give you that example as well. So for everyone, what Nandan is asking me is, Metasploit is an attack framework, okay? So for example, and उसको use करके हम लोग different applications, different operating systems को attack करते हैं, okay? And they've given the script, okay? It is a Python-based tool, right? तो ये VSFTPD is an application, okay? And उसमें ये backdoor command execution available है. So if we go to this process, right? So then they've given very elaborated process कि अगर आपके पास Metasploit है, the attack tool है,
और कोई और सर्वर है which is using this VSFTPD version 2.3.4, तो उसमें ये बैकडोर करके कर सकता है, right? What it does is it just says show me the target, तो ये बोलेगा टारगेट ये है, तो आप एक टारगेट सेट कर दो, राइट? टारगेट इज व्हाटएवर एप्लीकेशन इज रनिंग दैट एफटीपी, ओके? तो उसका टारगेट सेट हो गया, पोर्ट इज 21, एफटीपी पोर्ट इज 21, राइट? ऑलवेज, राइट? एंड देन यू जस्ट से एक्सप्लॉइट। तो ये 4 लाइन में, ये 4 सिस्टम्स में, ये 4 स्टेप्स में यू कैन इजीली एक्सप्लॉइट somebody else's machine, okay? If you give me some time or like maybe if we can have another session, then I can actually show the attacking part. We just took a lot of time just showing the basic stuff, right? Because a lot of stuff is still pending, okay? Let's come to threat. Threat is basically any potential event, okay, जिसमें जो harm कर सकता है, anything bad that can happen, okay? या नंदन, तो स्नेहल सर से बोलूंगा, मुझे एक और सेशन मिल जाएगा तो I can do that, okay, right? But let's come back to threat, okay? So threat is Sure. basically manage, yeah. Sure, sir. Right. So natural threats होते हैं, intentional threats होते हैं, unintentional threats होते हैं. For example, I go to a river. Okay. अभी river में क्या है? There's a threat of drowning, right? So it is not that I will drown every time I go to a river, but threat है. Okay. So there's a potential of harm if I drive fast. Okay. मैं गाड़ी अपनी बहुत तेज चलाता हूँ सड़क में, right? So there's a potential threat. There's a threat of accident, right? So these are called as threats. So vulnerability हो गया, right? Then threat is there, right? Now, apart from that, there's some thing called as risk. Okay, vulnerability जो asset मैंने बताया था, मेरा friend, मेरा laptop, मेरे पैसे, मेरा घर, मेरी bank balance, all that is asset, right? That asset multiplied by vulnerability multiplied by threat is called as risk. Okay, so risk is basically a potential for damage, right? जब भी एक threat exploit करता है किसी vulnerability को, so when you multiply threat and vulnerability with that asset, you get what is called as a risk. ओके, अर्थक्वेक का रिस्क आ सकता है, बिल्डिंग गिर सकता है, राइट? सो मोर द वल्नरेबिलिटी, मोर द थ्रेट, या मोर द एसेट, जितना ज्यादा एसेट होगा उतना रिस्क भी ज्यादा रहेगा, राइट? सो दीज 3 थिंग्स और दीज टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद इन साइबर सिक्योरिटी दैट वी कैन थिंक ऑफ. ओके, any doubts, any questions on vulnerability, threat, risk? No, clear, sir. But can you please just put a light on threat hunting? What exactly that term is? Threat hunting. Sure, sir. Sure. So threat hunting basically एक प्रोएक्टिव तरीका है. अभी क्या होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, हम लोग फायरवॉल लगाते हैं, एंटीवायरस लगाते हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स लगाते हैं, राइट? और ये एक डिफेंसिव तरीका है, ओके, we want to block the attackers from coming onto our network, coming onto our systems, for example, right? So this is a defensive way, which is a regular security operation center work, right? So this is blocking attackers, right? Stopping them from getting onto our network, right? Threat hunting is the opposite of this, right? We say कि ठीक है, आप अटैक करोगे हमारे ऊपर, हम आपके ऊपर अटैक करेंगे. Okay, so it is a proactive approach where instead of blocking or apart from blocking, any attacks, any malicious traffic, you analyze that traffic proactively, right? Or you identify unknown traffic or unknown things that are there within an organization's network. Okay, so इसमें क्या होता है, sophisticated threats रहते हैं. Okay, बहुत सारे ऐसे threats हैं जो normal intrusion detection या firewall detect ही नहीं कर पाता, and they quietly come into our systems. तो automated security tools होते हैं या जो SOC centers हैं, वो basically they are able to deal with 80% of threats, right? 20% जो है वो unknown threats हैं, nobody knows about them. Okay, so ऐसे threats को mitigate करने के लिए जो remaining threats हैं, they are very very sophisticated, they are very very stealthy, quiet हैं, hidden हैं, right? तो उनको check करने के लिए कि ये लोग क्या हो रहा है, किधर हो रहा है, right? That is where threat hunting comes into being. So वो क्या करेगा, threat hunting में network is there, right? An organization is there, right? And that organization is working fine. उसका browsing हो रहा है, सब कुछ fast हो रहा है, everyone is watching TV या YouTube देख रहे हैं, right? And attacker क्या कर रहा है, attacker का भी traffic आ रहा है चुपचाप. It is bypassing the firewall, it is bypassing the intrusion detection system,
then it is quietly coming onto systems and then waiting onto the system और quietly वो patiently siphon off कर रहा है data, right? या वो confidential data ढूंढ रहा है या search कर रहा है, right? या credentials को unlock करने की कोशिश कर रहा है, right? So ये चुपचाप हो रहा है और जो systems है हमारे पास, they are not even designed to know what is going on or what exactly is there onto the system, right? So ऐसे scenario में you use something called as threat hunting, right? Threat hunting is basically where everything is green, the lights are green, the network is working fine, speed बहुत अच्छा आ रहा है, people are very happy, people are listening to songs, people are looking at movies, right? Browsing हो रहा है, but the harmful things that are there on the network are searched in a proactive manner, okay? तो confidential information या जो credentials है वो leak नहीं हो जाए, right? Through unknown attacks, उसको ढूंढने का process is called as threat hunting, and it is a proactive way or a more sophisticated way of attacking. Noted, sir. Done. Okay, right now the typically top 15 threats are malwares, web-based threats, phishing, web application spams, denial of service attacks, threat identity theft, data breaches. Insider threats बहुत dangerous होते हैं because आपका friend जो है वो सबसे बड़ा enemy है. Okay, he knows more information about you, right? Or organizations में insider threats are those people who are already inside a network. They may be sitting with us, right? और वो अटैक भी कर रहा है, so very dangerous thing, right? Botnets पे है, physical manipulation है, right? Physical manipulation is like मैं किसी data center में जाके I can pull out a cable, power cable, वो machine down हो गया, so availability impact हो गया, right? Information leakage, for example, right? People जो मैंने दिखाया था, right? You can see people's data or what they are browsing or how they are browsing, right? और maybe जो Google वाले हैं, ये लोग स्कैन करते रहते हैं हमारे सिस्टम्स को. यू कैन इजीली सी व्हाट इज गोइंग ऑन, रैंसमवेयर, एस्पियोनाज, क्रिप्टोजैकिंग, राइट? तो ये सारा का सारा डेटा जो है ये थ्रेट्स हैं, राइट? सो इसको फर्दर अगर हम देखें तो मैलवेयर है, फिशिंग है, मैन इन द मिडल अटैक्स हैं, डिनायल ऑफ सर्विस है, डोमेन नेम और डीएनएस अटैक्स हैं, राइट? इफ आई चेंज facebook.com, राइट, व्हाटएवर आई टाइप, जो मैं टाइप करता हूँ, मेरा जो डीएनएस सर्वर है, इट कन्वर्ट्स द नेम इनटू आईपी एड्रेस and then searches onto the internet, right? But if I change that part, then I can easily manipulate somebody. Instead of going to facebook.com, it should come to mybook.com, right? तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, right? And then SQL injection is SQL injections, like malicious scripts or malicious queries being sent to a database, right? And then brute force. Brute force is breaking by brute force. You sort of break passwords, people's passwords. So इस तरह के कुछ common cyber threats हैं which are there or which are available on the internet. Okay. At every layer, we've studied OSI layer, right? वो 7 layers होते हैं ना, physical, data link, network layer, transport layer, session layer, presentation, application. हर एक layer के ऊपर जाके आपका अटैक हो सकता है. It is not that कि मैंने एप्लीकेशन को सिक्योर कर लिया सो मैं बच जाऊंगा, राइट? स्निफिंग, डेटा स्निफिंग हो सकती है, ट्रैफिक कैन बी स्निफ्ड, ओके? स्पूफिंग हो सकता है, मैन इन द मिडल हो सकता है एट नेटवर्क लेयर. ट्रांसपोर्ट लेयर जब आता है, राइट, विच इज लाइक एंड टू एंड कनेक्शन, एसएसएल, टीएलएल, ये सारा का सारा कनेक्टिविटी हो रहा है, वहां पे जाके रिकॉनेसेंस हो सकता है, राइट? सेशंस जब दो मशीन्स बात करते हैं, राइट, उधर हाईजैकिंग हो सकती है, राइट? सेशंस कैन बी हाईजैक्ड. Okay, so all these things kind of can be there. Presentation में phishing हो सकती है, where I can data representation जो है मेरा, instead of using some URL, I can use some manipulated URL, right? So वो phishing हो सकता है. And then application layer पे जहाँ पे where the human is sitting here, right? Systems के बाद, right? Exploit can be done on applications, right? So at every layer you can imagine so many attacks are there. So, and then if you don't secure one of them, right, so you are susceptible to attacks. Okay. Any doubts, any questions on this? Sir, a tech vector or a tech space might be, can we say what is the difference, or can we say it's a threat? It is a threat, yes, but उनका मतलब वही है, attack vector, attack threats are the same. ओके, ये ना साइबर में क्या होता है, वो लैंग्वेज बहुत अंग्रेज लोग, अमेरिकन लोग ना, वो बहुत अच्छा बना देते हैं और बहुत वो ग्लैमरस बना देते हैं. तो अटैक वेक्टर्स, अटैक थ्रेट्स, अटैकर्स,
black hat, hackers, ये सब का मतलब वही है. Okay, now it can be a malware, it can be a user, it can be a malicious person, right? So it is the only thing is अपने को सेव करने के रखना है, right? और सिक्योर करना है systems को using different processes that are there, right? And again these, so these are like the types of attacks are basically attack vectors. Exploit एक attack vectors होता है, phishing can be an attack vector. Okay, attack vector is basically the type of attack. Okay, sir. All right. Any doubts? Any questions? No, sir. All clear, sir. Okay. Okay. So we'll quickly jump on to vulnerable devices. Okay. So just open your browser. Okay. Internet चाहिए अपने को, right? And we'll try and find out unsecured devices. Okay. I told you सबके पास phones रहते हैं, machines रहते हैं, right? Laptops, desktop और सब internet से connect करके बहुत सब लोग खुश रहते हैं. हम लोग बोले browsing बहुत fast है. Okay. So these are devices जो patched नहीं है, systems available हैं वहाँ पे, password नहीं है किसी में, right? So things like these, right? And these become target to our attack. Okay. So attackers जो है वो basically use ये करते रहते हैं. So this can be done if you can buy or reuse some tools, right? There are different tools, attack tools हैं, right? Or you can prepare your own malicious scripts, malware scripts, right? Or you can just use a web browser and find out the devices. तो हम लोग ये तीसरा method use करेंगे to find out vulnerable devices over the internet. Okay. So I'm going to use something called as Shodan. Okay. So has anybody used Shodan before? Yes, sir. Okay. So Shodan is basically it's like Google. Okay. But Google क्या है? It is let me just A passive information gathering tool. it is a gathering tool, right? But it is a search engine for internet connected devices. Yes, Okay. sir. So it any device, anything that is there on the internet, right? अभी तो मेरे पास ये account है, so it doesn't give me a lot of information, but you have to buy the service to get as much information. और web engines में Google Bing में जो होता है वो website information आता है, इधर internet connected devices की information आती है. Okay. So this is a little bit about Shodan, and it is basically a very good way of finding out what systems are there. Okay, or when I say systems, it basically means, for example, I can do a general search matching say camera, for example. Okay, so let me just search title and camera. So these are like web cameras. Okay, web cameras जो दुनिया में लगा के रखते हैं ना, घर के बाहर लगा के रखते हैं. Okay, so ये इतने सारे Sir, Akashdeep sir, am I audible, participants? Yes, sir, you are audible. Yes, sir, you are audible. Okay, let me check. Again, we lost the connection from Akashdeep. Yes, sir. So please be there only. Today, really very interesting session going on. So let me call Akashdeep sir. Sir, can you hear me? Hello. Dr. Bhardwaj sir, can you hear me? Am I audible to you? Sir, you lost your connection. So participants, today really interesting and very good hands-on is going on. And this is just 1% of the cybersecurity that you are watching today. But of course, with the more practice and more hard work in this field, you will be the good investigator. Yeah, sir. Am I audible, sir, to you? Yes sir, sorry, my connection is not good. I'm in Dehradun. तो यहाँ पे बारिश होती है या कुछ ऐसा रहता है. अभी ठंडा शुरू हो गया है, so internet is not very good. Okay, but I was telling. Yes, but sir. we love Dehradun. It's green and Yes, hilly area. बस वो इसीलिए वही बढ़िया है. Okay, right. So now I was telling you about this
कैमरा फॉर एग्जांपल, राइट? सो 153 हमें आईपी मिल गया, राइट? अब हमने जैसे IP2 लोकेशन किया था, सो वी कैन लुक एट दिस IP2 लोकेशन, ओके, एंड देन आई कैन फाइंड आउट एग्जैक्टली किधर है. Okay, so let's quickly do this. We don't have much time. Till the time it is searching, let me just jump up. Okay, so it found out this Archie Nagoya में है, Japan में है. So this basically confirms. Cyber में क्या होता है? You got multiple tools to do the same thing. Okay, the scanning के लिए कुछ है, कुछ investigation के लिए कुछ है. So you have to validate that. एक tool कुछ बताएगा, ABC बताएगा, right? So you have to use another tool to basically figure out वो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है. Okay, so that is very very interesting or something to use there, right? Okay, let me just quickly show you. So this is something, this is somebody's network, okay? So इसमें क्या है कि अगर आप देखोगे तो ये port 81 यूज कर रहा है, HTTP 1.1. Now this 1.1 is a old technology, okay? So this basically what it means is it can be hacked. और इसमें ये firmware है, okay? Yamaha का कैमरा है, host name FWX120 है, right? इसका firmware version भी है. So things like these, when you gather things like these, इसको बोलते हैं information disclosure. Okay, so I can basically look at this and figure out some stuff. Okay, so इसको मैं अगर Google करता हूँ exploit, so यहाँ पे unmatched quick time vulnerability है, it can be exploited, right? So ये जो कैमरा है इसका you know some forums will be there, some chat forums will be there, जहाँ पे हमें इस तरह की information मिलेगी, right? That is how attackers basically they find out something and then quickly jump onto some stuff. Okay, let me just quickly show you a webcam. Yeah, Nandan, if it is on the internet, it can be easily used. Okay, so let me just show you this. So what you're seeing now is a live police cam. Okay, ये लंदन का है, AB रोड का है. Okay, अभी क्या है वो पुलिस वाले तो देख रहे हैं इस कैम को, right? But उसमें पासवर्ड नहीं है. So I was able to quickly access it and see it. So you can see it live. उधर 3:52 PM हुआ है, right? और ये live है, evening हो रहा है वहाँ पे, right? And even we are able to see it. So whatever is seen by police people, it is a security camera. We are able to see it as well, and you can see the quality as well, right? अगर कोई गाड़ी रुकेगी तो हम उसका शायद you know some उसका ID नंबर भी देख सकते हैं, right? So I'm just zooming in. Okay, so ये थोड़ा blur है, right? If it is stopping there, then the quality can be increased. Okay, so this is why if you don't put passwords, now imagine this is basically somebody else's camera, right? Or HD camera है, right? But then it is for police to monitor the whole surroundings. Okay, but if somebody wants to attack or do something malicious, they can also use it. Okay, any questions? Clear, sir. That's really interesting, sir. Okay. So that is how terrorists are using or Yes. getting advantage from this kind of loopholes that we are defining. And sometimes, we are just by default, we are just setting up the username and password admin, and they can do the brute force attack also to crack such kind of Exactly. username and password. Exactly. And you can find the terrorist attack. So it is really interesting Right. that you shown us, sir. Correct. Sure, sir. So if you have a weak password, this is what you will get. Okay. Yes, sir. Right now, let me just open this up and then show you. So this is a D-Link camera. Okay. Again, no passwords. Right. ये flow हो रहा है. It is showing me everything here. Right. And इसमें if I go to try to set up, I can I'm inside by the way. अगर आप यहाँ से देखोगे, ठीक है? तो ये लिंक मैंने डाउनलोड करके रखा था. Okay. So it is bad manners, but दिखाने के लिए मैंने किया है. Okay. So firmware version मुझे मिल गया, D-Link का कैमरा मिल गया,
DCS ये इसका मॉडल भी मिल गया, and I'm inside that camera. Okay, if I log out, I'll be out. But I was able to hack it easily, right? And it is live. Okay, 11:18 है, 3:52 PM है. So some European country का कुछ location है. Okay, we can find out the location by the way, right? Again, इसको हम copy करके IP2 location में अगर डालेंगे तो हम easily कुछ information gather कर सकते हैं. Let's see किधर कौन से location का है. So this is called reverse engineering, participants. If you are having any live things and if you are finding from the IP address, you are the investigator, you are doing the reverse engineering to find the exact location. Right, so this is Westport. Yeah, exactly, sir. All right. Any questions? Everyone is very quiet. मैं अपनी क्लास में सबको बोलता हूँ बोलो खुद क्वेश्चन पूछो. ओके आप एंड नो क्वेश्चन इज बैड. ओके ऐसा नहीं, शर्माने का नहीं. ओके अगर आपको कुछ भी पता है, कुछ भी नहीं आता, आप बिंदास पूछो. ओके You can ask any silly questions also. Yeah. Yes, participants, I am requesting you all, please be active and ask if you are having queries, ask the questions. Yes, sir. So it's any doubts, any questions? Not for now, sir. Okay. All right, sir. ठीक है. Okay, so we can stop the session, right? We maybe if we have some time next time or maybe next week, we can have another session. Right, Okay. sir, we don't want to stop you actually. This is really see some participants are asking, sir. No, sir. So this is how participants, the cybersecurity things are. If you are working and doing hard work on or doing some research on this kind of fields, you will not get what is the time. If you are working at the night, you can find the early morning also, continue, you can work with the different crime scenarios. So that's it for today. Let me quickly summarize the session, sir. At the starting of the sessions, participants, don't leave the sessions, because after that there is some announcement for you. So we started with the introduction to cybersecurity, where sir you shown us the live cookies and live network traffic inside the browser. So from this, with the different browser, we can see the network traffic over there. We discussed about the insecure protocol, HTTP and FTP. We discussed about the man in the middle attack, how data breach is going on, identity thefts, data damages, and unauthorized access. You well discussed about the demonstration of the What's My IP, where participants clear their idea. We've done the demonstration of the IP to location.com also. Sir, we discussed about the types of cybersecurity, importance of cybersecurity, and the goal of the cybersecurity. Discussed about the main pillar of the cybersecurity, that is CIA, confidentiality, integrity, and availability. One more very important things, CVSS. So we discussed about the CVSS also. We discussed about the CVSS score, so that we can find the different vulnerability score, and based on that, how attackers are planning the attacks. More we discussed about the passive attacks, so that we can plan the active attack also. So sir, overall the session was very informative, and we don't want to let you go actually, but times limits are there. So I really appreciate your time, because in a 2 hours and 30 minutes, we just took the 5 minutes break, mini break, and continuously you are showing the demonstrations, and it is really interested things for us. So again, I'll give you 2 more minutes for the participants. Participants, if you are having any queries or question, please ask to the sir. Sir. Absolutely, okay? Sir. Any, absolutely. Yes, sir. Yeah, any queries? Participants, you can unmute and you can ask the question. Yes, Mahakant, Bhumi, or hello, sir. Nandan. Yeah, please. Please go ahead. सर, अगर कोई आईपी है हमारे पास और ईमेल आईडी भी उसका है,
So based on the IP or email ID, we can get the location as well as the provider details. Yeah, And absolutely. No, but when I say you, सिर्फ पुलिस को access है. Okay, so they have legal authority. So अगर मैं या तुम जाएंगे किसी ISP के पास, बोले ये IP है, मुझे बताओ किसको दिया है, तो हमें मना कर सकते Okay. हैं. Okay. Right. You need, Yes, we got the provider, right? But correct. sir, वो जो जहाँ से connect हुआ है, वो proxy use कर रहा है, supposed to. So can we get the actual provider, because proxy through होता है तो हमको नहीं मालूम होता है. नहीं, proxy, लेकिन proxy के ऊपर भी तो log बनेगा ना, जहाँ पे आपने नहीं, वो connect किया, right? तो proxy provider को पकड़ना पड़ेगा, right? For example, इंडिया में if you a few months ago, Indian government ने, मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सारे VPN सर्वर्स को इंडिया से बाहर निकाला है, okay? Because they had these proxy servers, और ये लोग इंडिया में अपना नेटवर्क बचा के रखते थे. तो and when government asked for logs, so they refused कि हम नहीं देंगे, हमारी पॉलिसी है, अमेरिकन सर्वर्स हैं, राइट. सो उस टाइम पे अच्छा. इनको मना किया था, राइट. देन दे वर आस्क्ड टू गो आउट ऑफ द कंट्री. ओके, सो इसलिए प्रॉक्सी सर्वर में भी आपको लॉग मिलेगा, तो आपको कुछ जियो लोकेशन मिल जाएगी. नहीं, प्रॉक्सी सर्वर का लोग तो वो प्रॉक्सी सर्वर प्रोवाइडर के पास ही मिलेगा ना, जो जहाँ पे प्रॉक्सी है वहां से. करेक्ट. वो भी अपनी कंट्री का हो, तो अगर अपनी जो कोई हाँ, अलग कंट्री है तभी जिसके मैं साथ, बता रहा हूँ. हाँ, तभी मैं बता रहा हूँ, जो भी ऐसे जितने भी प्रोवाइडर्स थे जिन्होंने गवर्नमेंट को मना किया, उन सबको बाहर जाने को बोला इंडिया से. राइट. जो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो मैं साइबर क्राइम सेल से जुड़ा हूँ, तो वहां का एक केस स्टडी के लिए आया था. तो उसी ने ये दिया था कि भाई आप ये सब ढूंढ के लाओ, तो हम हमारे गवर्नमेंट अथॉरिटी से ये सब निकाल सकेंगे. राइट. करेक्ट. तो FIR अगर है, कुछ है, लीगल अथॉरिटी है, राइट, देन यू कैन टेक इट. यस. और सर, वन थिंग मोर, जो आपने स्टार्टिंग से लेके ये डेमो वेबसाइट्स दिए हैं, आपने वो जो चैटबॉट में पेस्ट किए हैं सर, लेकिन क्या है कि कई बार डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो वो चला जाता है. तो कैन यू शेयर द टू स्नेहल सर, और स्नेहल सर गिव अस. Let me answer this question. Professor Maulik sir, definitely you will get the recording also, but once we complete for the 2 weeks of FDP, then you can find from the ATAL website itself, and we will be sharing all the material. That's fine, sir. Yeah, so let me add on also, Dr. Bhardwaj sir, for the Maulik sir answer. Maulik sir, actually the proxy server that we are using, so there is some policies, they should give the all log details to the government or to the law enforcement agencies if we ask, right? But suppose if out of country matters are there, so we are having some country tie-ups also for the law enforcement. So if the countries under our policies, they will definitely give. So जो fact है ना कि मैं proxy server use करके बच जाऊंगा या IP jumping करके बच जाऊंगा, yes sir, right, definitely it will take a time to investigate, but of course we can get the attackers. Right, sir. Sir, one more question, sir. Is there any platform or any website to give the data sets of vulnerabilities, जहाँ पे हमको recent vulnerability का data set मिले, so analysis के लिए? Sir, latest तो नहीं मिलेगा. के लिए, हाँ, अच्छा. Basically, you might get 2019, 2018, हाँ, last 5 years, 3 years पुराना मिलेगा. So can you suggest such? Can I answer the question, sir? Yes, sir, absolutely. Sir, you can find from the Kaggle. I hope you know. Yeah, I know that, but rather than this. Sir, one is Kaggle, like one is this UNBA, Canada का एक website है, right? Yes. So they've got these extensive data sets. 2022 का है, थोड़ा पुराना भी होगा, 2020 का होगा, darknet का होगा, malware investigation का भी होगा, Android का. So if you are doing ML, AI, you can use this and then study this thing, right? For example, there was one DDoS. I'm working on one research paper, right? तो इसमें basically इनका attacks का बहुत सारा data है, 8 GB, 10 GB data. So you can sort of connect and then work on these.
Okay, sir. Right, sir. And Maulik sir, we will discuss more on this also when you are there for the offline sessions. Definitely, we will be working for the research purpose also. We will be discussing Yes. on this. Yeah. Okay, sir. Okay, okay, sir. Yeah. Thanks for your interest, and definitely we will discuss. Please remind us. We will discuss on this. Okay, sir. Sure, sure. Yeah. Any other questions? PhD scholars, students, MTech students, and faculty members. Then we'll wind up the session. Do me a favor, if possible, participants, is it possible to turn on your video, because this is second last day only today for the technical sessions. Let's have some snap for the our memorable moment. And I request co-host Manisha, please take the whole picture, because see, this is just a network, and through this network we will be in touch in future also. So I request co-host Manisha. Manisha, are you there? Yes, sir. I request Dr. Bhardwaj sir, please Yes, sir. Absolutely. stop your, Done, sir. yeah, please stop sharing your slide also, so that or do you want to share something, sir? Do you want No, to no, no, show? that's fine. No, no, no. Okay. Okay. So I request all the participants, please turn on your video for at least 1 minute, so that our co-host can take the picture. And I hope you are definitely enjoying this one. And let me, Dr. Bharadwaj sir, I'll take just 2 minutes only. Sure, sir. Through Sure. this platform, tomorrow is the last day for the online session participants. And okay, let me turn on my videos. Uh, yes. So tomorrow there will be the MCQ quiz exam for the whole the summarize of the whole 6 days. So I hope you jotted down all the topics what you learned. So there will be the MCQ exams after the completions of the sixth day of the online sessions. And I'll share the link in this meeting only. So you can appear in the exam, and based on that, we will do your assessment. If you are having any suggestions or feedback, feel free to post it in the chat box. Please don't forget to rate Dr. Bharadwaj sir here itself. 5 is excellent for this session, and 1 is poor. So you can please post the and give feedbacks. And I really appreciate, sir, your time. And definitely we will call you again and again for the from the RK University. And again, you can show us the your hands-on session, sir. Sure, sir. Anytime, anytime. I came to there at UPS Dehradun for the 15 days, and Okay. definitely I can say that I enjoyed the cybersecurity environment over there. I was Yes, there sir. for this Cisco Okay. network. Okay. Yes, sir. Yeah. Yeah. No, Yes, sir. sir. Absolutely. Next time come, we can meet. And maybe if RK University has some, so I'm also a guide. So if you want external support or anything, right, I can easily help you. Okay. Sure, sir. Sure, sir. Sure, sir. So again, I really thank you so much, sir. And let's wind up the session. Thank you so much, participants. You gave 15 minutes more for this session. But again, sir के session को छोड़ने का मन नहीं हो रहा है. And that is what we took more 15 minutes. Please put your feedback for the Dr. Bharadwaj sir. Let's sign it off from this session. Thank you so much, sir. Sure, sir. Absolutely. Thank you. And all the best for your Thank exams. you. Thank you, sir. Thank you. Okay, so that was the announcement. I repeat again, tomorrow there will be the exam for the faculty members, MCQ exams. And then tomorrow onwards, I will share what homework that you need to do, and
what things you need to keep with you for the offline sessions, and how you can prepare your reports and journal. That all templates I will share with you by email. Thank you so much once again. Bye bye. Take care.